A 14 years old boy, headache since 2 months. ठीक है। 14 साल का लड़का है, उसको सर दर्द जैसे 2 महीने से। कोई और कंप्लेंट नहीं है उनकी? नहीं, जस्ट हेडेक ही है। चलिए ठीक है, शुड आई स्टार्ट? जी जी, स्टार्ट कीजिए। जी सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैंने आपके बच्चे की बीमारी के मतलब कुछ सवालात पूछने और इसका मुआयना करना है। इस तरह कोई तकलीफ होती, कोई मसला होता है, मुझे बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। क्या मुझे इजाज़त है? जी। ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? हाँ, दानिश है। दानिश। आपकी उम्र 14 साल है। आप पढ़ते हैं? जी, मैं स्कूल में स्टूडेंट? पढ़ता हूँ। पढ़ाई छोड़ी हुई तो नहीं है आपने? जी, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। हैदराबाद के रहने वाले हैं। और आप किस हाथ से काम करते हैं, यानी किस हाथ से लिखते हैं आप? हाँ, सीधे हाथ से। राइट हैंडेड। दानिश साहब, आपने मुझे बताया कि आपके सर में दर्द है 2 महीने से। इसके अलावा मैं कुछ और सवालात पूछूंगा, आपने हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है मुझे? आपको सर दर्द के साथ कोई बेहोशी तो नहीं जी। होती? नहीं, बेहोशी कभी भी नहीं है। बेहोशी कभी नहीं हुई? नजर आपकी ठीक है? जी, नजर सही है। नजर भी आपकी सही है। इसके साथ कोई मिर्गी का मसला तो नहीं हुआ? मिर्गी क्या होती है? झटके तो नहीं पड़ते आपको? नहीं, झटका। सर दर्द का झटका पड़ता है। सर दर्द का झटका पड़ता है? एक साइड जिस्म की कमजोरी या सुनपन तो नहीं है उसके ऊपर? नहीं, ऐसा। ये भी नहीं है आपको? और इसके अलावा चलने फिरने में मसला तो नहीं होता, बैलेंस का इशू? नहीं, ऐसा। ऐसा चले। भी नहीं है? ठीक है। और इसके साथ कोई बोल चाल में मसला तो नहीं है आपको? नहीं। ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं हाथ रख के कि सर में दर्द आपको कहाँ पे होता है? ये मुझे दरमियान हिस्से में होता है सर दर्द। पूरे सर में होता है? दरमियान में शुरू होता है और उसके बाद पूरे सर में फैल जाता है। पूरे सर में फैल जाते हैं? दर्द अचानक शुरू हुआ था या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ था आपको? शुरू में ये थोड़ा दर्द होता था, लेकिन अब ये इसकी शिद्दत जो है काफी बढ़ गई है। बढ़ता जा रहा है? दर्द कैसा होता है? जलन होती है, दबाव महसूस होता है, कोई करंट लगता है आपको? ऐसे लगता है जैसे सर मेरा कोई दबा रहा है। सर कोई आपका दबा रहे है? दर्द मुंह के आगे या सर के पीछे जाता है, ये या उधर पूरे ही सर रहता में है? फैल जाता है। पूरे सर में फैल जाता है। और इस दर्द के साथ कोई उल्टियां आती हैं आपको? हाँ, उल्टियाँ भी मुझे कभी कभी, जब शिद्दत बहुत ज्यादा होती है सर दर्द की, तो मुझे उल्टियाँ भी आती हैं इसमें। उल्टियां भी आपको 2 महीने से हैं? तो उल्टी एक या दो दफा मुझे आई होगी अभी। एक या दो इस सर दफा ही की। है? ठीक है, इसके बारे में पूछ लेता हूँ। ये दर्द आपको मुसलसल रहता है, बीच में वक्फा आता है? तकरीबन सारा दिन ही रहता है ये। मुसलसल रहता है। और सर झुकाने पे दर्द बढ़ जाता है आपका? ये कभी मैंने महसूस नहीं किया, पर ज्यादा काम अच्छा, वगैरह मैं करूँ तो फिर बढ़ जाता उससे बढ़ जाता है जोर लगाने से, यानी दर्द बढ़ रहा है आपका? और दवाई है। वगैरह लेते हैं इसके लिए, कोई दर्द के लिए आप पैनाडोल या कोई और मेडिकेशन? हाँ जी, मुझे दर्द की कोई दवाई दे देते हैं तो उससे फिर जी ये जी। थोड़ी देर के लिए बेहतर होता है। लेकिन जैसे ही ठीक है, उसका असर खत्म होता है दवाई का, ये फिर से फिर से शुरू हो बढ़ जाता जाता है? है। अगर हम इस दर्द को नंबर दें 1 से लेकर 10 तक, तो 1 होगा काबिले बर्दाश्त, 10 होगा नाकाबिले बर्दाश्त, आप इसी शिद्दत को कैसे बयान करेंगे? ये तकरीबन 6 से 7 के दरमियान। शुरू से इतना ही है? पहले कम था, हल्का हल्का मुझे महसूस होता था। अच्छा, ये जैसे सब एक चीज और बता दें कि जब सर में दर्द होता है, आपको दो दो नजर तो नहीं आते, धुंधलापन तो नहीं हो जाता? नहीं, ऐसा कभी। अच्छा, आपने उल्टियों के बारे में बताया था, ये उल्टियां 1 2 दफा आपको आई हैं? सुबह के वक्त आई हैं, रात के वक्त? कोई मखसूस टाइम नहीं है इसका, पर जिस टाइम सर में दर्द शदीद बढ़ जाता है तो उस टाइम मुझे होता दर्द आपको सुबह के वक्त ज्यादा होता है, रात के वक्त ज्यादा होता है? है। ऐसा जिसका कोई टाइम नहीं है, पर सुबह के टाइम पे ये ज्यादा होता है। कभी रात को जागे तो नहीं नींद से, दर्द की वजह से आप? नहीं, ऐसा कभी। ठीक है। इस सर दर्द के अलावा आपको कोई मसला नहीं है? आई वुड लाइक टू आस्क द फैमिली सम क्वेश्चंस।
आपने कोई इनके रवैये मिजाज में कोई शख्सियत में कोई तब्दीली महसूस की है कि गुस्सा ज्यादा करता हो, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया हो, गालियां देता हो, गैर मुनासिब बातें करता हो? नहीं, ऐसा कोई छोटा कंप्लेन नहीं पेशाब की निकल तो मैंने। नहीं जाता इनका? नहीं, ऐसा भी नहीं। छोटा पेशाब ही नहीं निकलता। याददाश्त कैसी है आपकी? रात को खाने में क्या खाया था आपने? रात को खाने में डबल रोटी और सालन खाया था। अच्छा, आपको तारीख पैदाइश याद है? याद है अपनी? जी जी। ठीक है। और कान में आपको अजान अजान की आवाज़ सही आ जाती है? जी बिल्कुल। ठीक है। और दोनों हाथों से पैसे गिन हिसाब किताब कर लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, कपड़े पहनने में, कपड़े चेंज करने में कोई इशू तो नहीं होता आपको? नहीं, ऐसा महसूस ऐसे नहीं में चले चमकारे या होता। फ्लैशेस तो नहीं आती आपकी? अच्छा ठीक है। कब पकड़ते हो हाथ आपके कांपते तो नहीं है खाना नहीं, खाते हुए, ऐसा भी चम्मच नहीं है। पकड़ते हुए, किसी चीज को पकड़ते हुए? ऐसा भी नहीं है? चलते हुए टांगे खोल के तो नहीं चलना पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब उठ के बैठते हैं, बैठ के खड़े होते हैं, आगे पीछे की तरफ तो नहीं गिरते गिरते कि बैलेंस खराब होता हो, आगे पीछे गिरना नहीं, हो? नहीं, ये ऐसा भी नहीं नहीं है। है? दो दो नजर भी नहीं आता आपको? नहीं, अच्छा, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर या नीचे उतरते हैं, ऊपर नीचे देखने में कोई इशू होता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। आई वुड आपका खाना पीना कैसे, दिन में कितना टाइम खा रहे हैं? 3 टाइम या 3 टाइम ज्यादा जैसे कम? खाना खाता। 3 टाइम खा रहे हैं। वजन ज्यादा कम तो नहीं हुआ आपका? नहीं, वजन तो सेम ही है। वजन आपका सेम ही है। प्यास कैसी है आपकी? कितना पानी पी लेते हैं? तो नॉर्मल जैसे पानी पीते हैं। नॉर्मल। पेशाब ज्यादा तो नहीं आता कि हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ता हो? नहीं, ऐसा नहीं। जिसम पे कोई दाग धब्बे तो नहीं बन गए आपके? नहीं, नहीं। ठीक है। और कल आम बच्चों से आपका बढ़ तो नहीं गया कि आपको फील होता हो कि मैं बाकी बच्चों से लंबा होता जा रहा हूँ? नहीं, सेम ही हाइट है बाकी वजन भी, बच्चों के साथ। सर्दी गर्मी आपको ठीक महसूस होती है? ज्यादा तो नहीं लगती? नहीं, सही महसूस होती है। बाल खुश खुरदरे तो नहीं हो गए? नहीं, नहीं, बात से नहीं। ऐसा तो नहीं होता आप खड़े खड़े गिर जाते हो कि बेहोश हुए दोबारा दोबारा खड़े हो जाते हो, नहीं, या कभी टांगों भी में बेहोशी आसान? की। अच्छा, ये नहीं हुआ आपको कभी कभी भी? भी ऐसा नहीं हुआ। कोई कमर में दर्द या गर्दन के पीछे दर्द आपको? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, सूंघने की स्लाइड ठीक है? खुशबू बदबू का पता चल जाता है आपको? ठीक है, बेहतर है वो भी। चेहरे की एक साइड कोई सुन तो नहीं है? नहीं, सुन बना दे। खाना खाते हुए मुंह से कुछ निकल तो नहीं आता बाहर, दुकमा लेते हुए नहीं, खाना ऐसा खाते हुए? ठीक है। सुनाई भी आपको सही देता है दोनों कानों से? दोनों कारणों से सही सुनाई। दोनों कानों से। अच्छा, खाना खाते हुए उतरू तो नहीं आता कि नाक से बाहर आ जाता हो पानी, या खाना खाते हुए उतरू आ जाता हो, ऐसे इशू तो नहीं है आपको? नहीं, ऐसा हुआ नहीं कभी भी। जबान खाना खाते जबान कभी? नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा, इससे पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है आपका? नहीं, पहले कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। पहले कोई ऑपरेशन, कभी अस्पताल में एडमिट रहे हैं किसी और मसले के साथ आप? नहीं, कभी भी अस्पताल में नहीं। कभी अस्पताल में एडमिट नहीं रही। और इसके अलावा कोई दवाइयाँ ले रहे हैं दर्द के अलावा, कोई और किसी चीज़ के लिए? नहीं, कोई भी। अच्छा, आपको कोई दायमी बुखार वगैरह तो नहीं रहता? लंबा अरसे के लिए जैसे बुखार तो नहीं रहा बुखार आपको आ पिछले? जाता, सर्दी की वजह से जो हाँ बुखार जी। आता है। सर्दी की वजह से जो बुखार आता है। अच्छा अच्छा, यानी कोई लंबा बुखार नहीं चला आपको? फीवर होता है, अभी है आपको? नहीं, ठीक नहीं। नहीं, मिला- कान से पीप आती हुई भी इशू नहीं है? कोई जिसम पे गिल्टियां बन गई हों? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं आई कांट हियर यू। अच्छा चलो ठीक है। टीबी है। तो नहीं रहा आपको? घर में किसी को टीबी तो नहीं है? नहीं, टीबी तो हाँ, नहीं। हेलो। टीबी नहीं, नहीं टीबी है, नहीं ठीक है। है। और कभी भी नहीं लगी आपको? ठीक है। कभी नहीं, चोट भी नहीं लगी आपको? बचपन चोट में भी नहीं गेम लगी खेलते हुए। आपको। और कोई तो उसके बाद कोई सर पे लगी थी या आपको दाखिल होना पड़ा था उसके लिए आपको? नहीं, नहीं, मुझे हाथ में चोट लगी थी गेम खेलते हुए। ठीक है। आपको खांसी वगैरह तो नहीं रहती? नहीं, खांसी तो नहीं। अच्छा, बड़े पेशाब में खून तो नहीं आता आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कोई जिसम पे गिल्टियां तो नहीं बन गई? नहीं, ठीक है। और अम, खानदान में किसी को अल्लाह ना करे कोई कैंसर की बीमारी या दिमाग की रसूली, ऐसा मसला तो नहीं है? कमर में दर्द रहते हो जिसमें पे कोई दाग धब्बे बने हो किसी के? नहीं, ऐसा मुझे पता नहीं।
चलिए ठीक है। आई एम डन विद माय हिस्ट्री। ठीक है बेटा, you can start with your examination. Okay, sir, I will start with my clinical. First of all, sir, should I skip? I'll introduce myself again because I'm taking consent for physical examination, Hmm, and I'll ask the patient if he's any pain, he can stop me at any time. ठीक. So, sir, so should I do the vitals or I can skip it? Vitals you can skip it, कोई ऐसा नहीं है, but you can ask. uh, Yes, sir. तो इनके कितने ब्लड प्रेशर वगैरह, 14 year old में ब्लड प्रेशर का इतना मसला तो नहीं होना चाहिए, बट यू कैन आस्क कि इनका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं. Yes, sir. ठीक है. I'll start with general physical examination. I'll check the pulse of the patient. I'll check for any clubbing or chylomicria. I'll examine the oral cavity. And I'll check the scalp again for any scars because the patient has told me that he has a history of trauma. For any shunt, he has not even, or any possible shunt or any other scars. And I'll पल्स check for इसकी the, ठीक है, 60 है. ठीक है sir. Sir, in general physical examination, I'll check examine the scalp for any bony hypostosis or any enlarged lymph nodes for any scars. And then I'll start There with the is frontal lobe no signs. hyperostosis. The FOC is fine. उसमें भी कोई Yes, sir. वो मैक्रो माइक्रोकेफाली कुछ नहीं है. ठीक है. ठीक है sir. I'll start with the lobar examination and I'll start with the frontal. I'll check for the frontal release signs. First of all, I'll do the pronate glabellar tap, and then I'll check for the pronator drift. Then I will check for the memory. I will ask short-term questions कि रात को क्या खाया था आपने या सुबह को क्या खाया था और पाकिस्तान कब बना था या तारीख पैदाइश आपकी क्या है. Then I'll check for the parietal lobe signs. I will check for the agraphesthesia, stereognosia. I'll check for left-right disorientation. I'll check for two-point discrimination. And then I'll go for cerebellar examination and I'll check for dyssynostocheinesia. I'll check for जो any. memory is intact, बहुत बहुत Yes, short sir. term and long term memory. आपका कोई भी लिटलाइजिंग साइन नहीं है. ठीक इसको है. इसका ग्रास रिफ्लेक्स भी ठीक है. कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स नहीं है कि आपका. जी सर. ठीक है. ठीक है sir. I'll do the cerebellar examination and first of all check for any nystagmus, horizontal, vertical both. And I'll ask the patient to I'll check for dysarthria by asking the patient to pronounce Kastantunia. And I'll check for dysrhydokinesia in both hands, and I'll check for finger nose test, and I'll make the patient stand and check for Romberg's and check for tandem walk. I'll ask him to sit again, and I'll start from the cranial number one, and इसका I'll जो check. cerebellar signs हैं, they are all negative. There are no, Okay, sir. not even subtle cerebral signs are present. Okay. Okay, sir. I'll start for the cranial nerve exam and I'll check for the nasal patency. I'll check for any nasal polyps and I'll ask for check for olfaction in the first cranial nerve in the both nostrils. And secondly, I will then check for visual acuity and I'll ask the patient to close his one eye and I will ask if he can count my fingers. If he can count my fingers in both eyes, I'll do the Ishihara test and the Snellen chart. I'll ask him to read them both, and then I will check for direct and indirect light reflex. I will check for extraocular movements, and I will check for fundoscopy, and I will do a visual field parametry. After that, I'll check for Yes, sir. निस्टैग्मस ठीक है, कोई निस्टैग्मस नहीं है. विजुअल एक्विटी में एट टाइम्स ही सेज देयर इज लाइक ब्लरिंग है. सर कौन सी आंख में? both eyes generally blurring. At times he says he has got a ठीक है. blurring. But Both eyes. जी. Sir, extraocular movements are normal. Is there any diplopia on checking the extraocular movements? There is no diplopia. Okay, sir. What about fundoscopy? I would like to know the grade of papilledema. There is a slight upgrade one कह सकते हैं papilledema. ठीक है, mild. ठीक है, sir. And I will check for is the visual parameter is normal? Sorry, what? Sir, visual confrontation test, visual parametry, Visual temporal field cuts. parametry is fine. Upward gaze, you can say it's slightly restricted. Okay, upward gaze. Sir, is there any Slightly. upward gaze palsy in this Slightly, patient? मतलब कोई palsy as such नहीं है. But Okay, there is okay. a subtle upward gaze. Sir, is there any loss of accommodation reflex because I check it at end of my extraocular movements?
Is the accommodation reflex intact? Reflexes are intact. Okay, sir. I'll check for the trigeminal nerve now, and I will start with the light touch and pinprick, and then I will check for the muscle domestications. I'll ask consent for corneal reflex from the examiner before performing it, and I'll check for the uh, Corneal reflexes intact. Muscle power ठीक है इनकी. वो ठीक. Georgic जी जी जो. Georgic exaggerated भी नहीं है, ठीक है sir. I will check for the facial nerve now, and I'll start with the forehead. I'll ask the patient to look up at the roof, and I'll ask him to forcefully close his eyes and not open them. And I'll ask him to blow air in his mouth and smile and show me the teeth of his mouth. Seventh I'll nerve is ask him, okay. seventh nerve is okay. I'll now inspect his ear for any signs of discharge or any pus, and I'll do a whisper test in both ears, and I'll check the Reines and Webers on both ear. There's Are no these normal as well? visualizing sign. Okay. Okay, sir. And then now I'll check for the 9/10 cranial nerve. I'll ask the patient to open his mouth, and I'll check for the uvular position and ask him to say ah, and I will कफ say गैग see. भी ठीक है इनका. ठीक है, कफ गैग. sir. Okay, sir. Now we'll check for the shrugging test and the shoulder shrug and the sternocleidomastoid. Both are intact as well. आप क्या चेक करना चाह रहे हैं, कौन सी टेस्ट से? Sir, 12th nerve. Oh, sorry, 11th nerve, sir. Accessory spinal nerve. They are fine. Okay, sir. 12th nerve is also fine. Hypoglossal nerve because I'll ask the हाइपोग्लॉसल इज patient. फाइन, कोई उसमें नहीं है. टंग Okay, की sir. डिविएशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फिब्रिलेशन नहीं है. Okay, sir. I will start with the upper limb examination now. I'll ask the patient to sit comfortably and expose his arms to till mid arms if he's wearing any clothing over it. I'll check for any fasciculations, any loss of bulk. I'll check for the distal pulses in the upper arm. And I'll start with the tone. I'll check the tone of the upper arm, and I'll check the power at the C5, C5 deltoids, C6 for biceps and wrist extension, C7 triceps extension, C8 finger flexion, and T1 abduction adduction of the fingers. And after that, I'll check for the ये reflexes. क्या I'll चेक compare करेंगे both. आप? Sir, CA-T1 का sir finger flexion, wrist, यानी I'll ask the patient to make a wrist, ठीक है, sorry, make a fist, and check the adduction and abduction of the ठीक है. fingers. And I will also then check for the biceps reflex in both arms and compare them. And I'll check for the triceps reflex, compare them, yeah, and I'll check for the brachioradialis reflex as well. And if there, I'll also check for the Hoffman in reflexes. And in sensory, I will start from the C3 in the supraclavicular fossa. I'll check at the C4 at the acromioclavicular joint. I'll check for the C5 at the deltoid badge area. I'll check for the C6 in the thumb. I'll check for the C7 in the middle finger. I'll check for the C8 in the little finger and T1 in the medial arm. And is there any loss of sensation in this patient? And there's no loss of sensation. Power. Okay, sir. Okay, sir. I will check for the proprioception at the thumb, and I'll check for the joint position, joint vibration as well at the base of the thumb. And I'll extend my exam to his neck, and I'll before doing indemnity and swelling, I will ask the patient to extend his arm and flex his arm, sorry, neck, and move it sideways, and ask if there is any pain. And if there's no pain, sir, should I do the dermatitis and swelling on this patient? No, dermatitis Okay, sign की sir. जरूरत नहीं है. ठीक है, sir. I'll ask the patient to stand, and I will check for the rhomboids in this patient, and I will ask him to walk. And when he ask him to stop and ask him to walk in the walk back by tandem walk. And sir, is there any imbalance gait ataxia in this Gait patient? imbalance ataxia नहीं है. ठीक है, sir. I'll ask the patient now to lie down, and I'll start with the lower limbs. I'll check for the tone. Sorry, I'll check for the bulk again, and I'll check for the distal pulses. I will check for the tone and clonus and SLR, and then I would check for the power at the L1, L2. I will ask the patient to flex his hip and then flex his knee and extend his knee, dorsiflex his foot and plantar flex his foot, inversion, eversion of the foot. And then I'll check for the reflexes in both knee and ankle, and I'll check for the planters. Are the planters up going? No, planters are not off. Planters are down going. Mm. Okay. I'll check for the sensations now, and I'll start from the base S1, and I'll go up till L1. मैं 5 बजे And
Sir, I will check for the sensory now and start from the S1 and go up till the L1. And I will ask the patient turn over and check S2 in his popliteal fossa. And I'll also check his perineal region for any loss of sensation and cellular anesthesia. When the patient is turned, I'll also examine his back so that the patient has minimum movement and check for any deformity in the back if there is any pain in the back. I'll ask the patient to Deformity in the back. turn straight. No, sir, is there any deformity in the back? There's no deformity in the back. ठीक है sir. I'll ask the patient to turn supine again and I'll expose his abdomen and I will check for any abdominal reflexes. Sir, are the abdominal reflexes They are exaggerated? intact. They are intact. They are intact. I will, sir, lastly, I'll check for the proprioception again in the lower limb at the thumb, sorry, at the toe. And Proprioception is and fine. proprioception is fine. Lastly, sir, I'll check for the lymph nodes in the axilla and the inguinal region, and I will check for auscultate for the chest. And sir, I think I'll conclude my exam with that. Okay, you have done well. You have been quite thorough. Yes. Now you have 2-3 minutes to अपनी जो है thoughts को finalize कर लें so that we can start Yes, sir. taking. You have 2 minutes. इसमें आपने कुछ लिखना है तो लिख लें आराम से क्योंकि you still have. We will start it at 3:30. अगर Yes, आपको sir. कोई चीज रह गई है तो आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं अगर नहीं है तो आप Sir, I'll ask from the patient if there is anything he has not told me and he wants to tell me that I have not asked him. कुछ आप बताना चाहते हैं दानिश साहब जो आपने मुझे नहीं बताया? नहीं, that's about it. ये है main conclusion. ठीक. ठीक है Sir, the patient only has headache. I think we can start our discussion. Okay, तो ठीक है बेटा. So on the basis of your history and examination, what do you think? What are the different things that comes into your mind, starting with number 1, number 2, number 3? Sir, the patient has signs of increased ICP, headache with vomiting, and no literalizing signs, however. And it is acute in onset, which is since 2 months. Sir, there are no lateralizing signs, there are no localizing signs, and there is papilledema on examination in the eyes. So I'm suspecting an increase in intracranial pressure in this patient. Naturally, that is one thing the patient has. One thing जो आपने history में एक चीज नहीं पूछी कि does he have any early morning headaches या early morning vomiting जो? Yes, sir, I did ask for diurnal variation, but that was at the end. मैंने आखिर में पूछा था इससे. So very good. So that is one thing the patient has. Slight Yes, signs sir. of early hydrocephalus. Now, so what do you think? Why is he having this hydrocephalus? Is it an idiopathic hydrocephalus, or it can be secondary to anything? So what does? Sir, it's unlikely to be congenital because it's of acute onset and he has no previous history. And it's less likely to be acquired because he has told me he has no hospital admissions which would indicate any meningitis or intraventricular bleed he might have. He also has history of no trauma. neck stiffness, so fever. Sir, it's infection. most likely something which is obstructing the CSF pathways in the midline because the patient has no lateralizing or localizing sign. It can also be something in the brain, which is in the non-aliquot cortex. Okay, so where do you think it would be? Sir, it can be in the right frontal lobe. It can be in the non-dominant parietal lobe. Why would you say can right frontal lobe, beta? And why would you say left frontal lobe? Right frontal lobe में होता तो क्या? sorry, right. Sir, I said right frontal lobe, sir. Huh? I said right frontal lobe, sir. Right frontal lobe. Yes, sir. Yeah. Why did you say that? You were doing really well. Sir, पहले कि भाई there yes, has to be something, there is no lateralizing sign. It has to be something yes, in the sir. midline. Then why all of Sir, a sudden with yes, sir. आपने कहा Sir, lobe and because parietal lobe? Why? sir, I wanted to include neoplastic etiology in my differentials as well. Because yes, sir. You have आपने conclude किया है कि this has to be something. There's no lateralizing sign. Yes, sir. So it has Yes, sir. to be a midline structure. Yes or no? Yes, sir. So Sorry, sir. I shouldn't have said that. Midline.
ये तो आप Yes, sir. अपना भी अपना ग्रेव खोदना शुरू कर देंगे ना बेटा। तो Yes, sir. एग्जामिनर वुड कि व्हाट इज द फ्रंटल लोब में आपके क्या सिम्टम्स हैं, तो उसके तो कोई सिम्टम्स नहीं है। फ्रंटल लोब में बिहेवियरल चेंजेस आती, सब कुछ आता, वो तो कुछ नहीं है इसमें। Yes, sir. सो आई हैड गिवन यू अ हिंट ऑल्सो इन माई Yes, sir. आपके हिस्ट्री टेकिंग में। तो इट हैज टू बी इन द मिड लाइन। सो वेयर इन द मिड लाइन, यहाँ पे कहाँ पे हो सकता, कहाँ कहाँ पे ये चीजें हो सकती। Yes, sir. I screened from the midline, and I started from the basically at the floor of the fourth ventricle. The patient had no diplopia or any facial palsy, and he had no problem at the aqueductus sylvius because the patient had no problems seeing down. But he did mention that in the examination that he had problems seeing up. So I'm suspecting something at the level of aqueductus sylvius blocking it, and in the midline furthermore, he has no endocrine dysfunction, which will rule out any third ventricular involvement. He has no diabetes insipidus or hyperphagia, which will rule out any hypothalamic involvement. There can be some lesion at the level of foramen of Monro as well, because that's also the age group of this patient. I'm suspecting something at the level of foramen of Monro or something at the level of aqueductus sylvius, sir. Very good. Tell me, what are the commonest tumor in the midline in a 14-year age? What common tumors जो होते हैं, जो इस एज ग्रुप Sir, में in कॉमन this होते हैं? particular age group, we can suspect a cellular suppressor like craniopharyngiomas, or we can suspect some pineal gland tumors, or we can suspect like medulloblastomas, ependymomas, or brainstem gliomas. हाँ, फोर्थ वेंट्रिकल मिड लाइन के जो हैं स्टार्ट करते हैं, फिर आपको पिट्यूटरी हो सकते हैं, क्रेनियोफ्रिंजियोमा एंटीरियरली हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसको कोई एज सच कोई वो नहीं था, तो, उसमें आपने कहा है कि हार्मोनल कोई नहीं इम्बैलेंस, Yes, कोई sir. ऐसा नहीं, जो चांसेस आर लेस। कोई फील्ड इफेक्ट्स आपने नहीं पूछे, लेकिन फील्ड इफेक्ट्स इसको नहीं है, तो वो Yes, sir. उसका चांस कम हो जाता है। देन यू कम बैक। वेरी गुड। पाइनियल रीजन में ये Sir, हो सकता है। pineal region वेरी just गुड। व्हाट because he आर said he द has some problems seeing up. सिम्टम्स ऑफ द पाइनियल रीजन टू? Sir, it involves the dorsal midbrain. So there would be up gaze palsy, Perinaud syndrome features. The patient would have problem seeing up. He वो would मैंने have आपको वो convergence हिंट nystagmus. मैंने आपको वो हिंट दिया Yes, sir, था you ना। gave me a hint. Yes, sir, you ठीक gave है, me a hint. examiner will always give you a hint. Examiner is there to pass you, beta. So Yes, whenever sir. he is telling you something, तो listen to him. कोई इससे Yes, sir. आपकी दुश्मनी नहीं होगी. He would do. Now tell me, what are the common tumors in the pineal region? Sir, in this age group, it can be germ cell tumor. It can be some glial tumor. And these are the two most commonest tumors in this age group. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और भी कुछ हो सकता है बेटा। Sir, it जर्म can सेल be होते some, हैं, एक नॉन yes, जर्म sir. सेल होते Sir, हैं। most common ये ठीक होते हैं, है, फिर sir 5 groups होते हैं further. There can be like उसके बाद some कौन सा tumor. ट्यूमर होता है? हम्म? Sir, there can be some tumor arising from the pineal architecture like pineocytoma, pineoblastoma. There can be some glial tumor like astrocytoma, high-grade glioma. There can be वेरी some tumor arising from arachnoid capsules like meningioma, and there can be tumors arising from the germ rest cells like choriocarcinoma or yolk sac tumors. And there can be tumors, this is site for metastasis as well. And there can be some other tumors like epidermoid cysts, like pineal cysts, and some there can be vascular etiologies as well, like vena ganglia malformation, some AVMs. Very good. These are Exactly. Now, if you summarize it, it would be a germinoma, non-germ cell tumor, pineoblastoma, pineal cyst, metastatic tumor, lymphomas, yes, and then Galen की वहाँ पे उस एरिया में होगी. तो what do you yes, sir. think in a 14-year-old? अगर आपको पता है इसको पाइनल रीजन में ट्यूमर है, तो आपने क्या हिस्सा, अगर मैं कहूँ कि आप पेशेंट को दोबारा एग्जामिन करना चाहते हैं, तो आप क्या व्हाट organ would you like to examine? Sir, what? Sir, I did not get the question.
एक चीज को अगर मैं कहूँ कि आप पेशेंट को दोबारा एग्जामिन कर लें तो कौन से पार्ट को एग्जामिन करना चाहेंगे? पाइनल रीजन में ट्यूमर है तो आप Sir, it depends on the extension of the tumor. If it's compressing the midbrain, there would be convergence. There would be upcase palsy, Paranoid syndrome, वी आर features like टॉकिंग convergence अबाउट, nystagmus. अभी तो हम Sir, सिर्फ I would, क्लिनिकल एग्जाम पे बात कर रहे हैं ना। sir, हमने कहा extraocular movements, पानी में ट्यूमर है क्या? वो extraocular तो हमने movements, बता sir. दिया, आपने कर लिया है, इसको पेरिनोड सिंड्रोम हो रहा है इनिशियल। ठीक है, तो आपको पता है कि टेक्टम पे थोड़ा सा Uh, प्रेशर है, हाइड्रोकेफलस है अर्ली। तो अब हमने पाइनल रीजन में 14 ईयर ओल्ड बॉय में सबसे कॉमन ट्यूमर तो जर्मिनोमा और नॉन जर्मिनोमा होते हैं ना। yes, sir. Germ उसमें cell अगर tumors. कहूँ कि आप कोई यू वांटेड टू एग्जामिन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो कौन सा पार्ट यू वुड लाइक टू एग्जामिन? दिस इज Sir, I आपको would एक्स्ट्रा check his, yes, sir. क्वेश्चन। हाँ, Yes, sir. I would check his lower spine again, and I'll check for his gonads. I will check his testes. गोनेट्स बेटा, गोनेट्स। Yes, ठीक sir. है, हाँ ठीक है। अगर आपने Sir, ड्रॉप I मेट्स wanted to जा clarify. रहे हैं I'm तो suspecting drop mets. It is a high-grade tumor. Yes, sir. ठीक, गुड। सो नाउ वी हैव मोर or less decided that it is in the region of the pineal region. Uh, so, how would you investigate this patient? Start with Yes, sir. laboratory I would check investigation. for in case AFL in my hospital. Beta HCG for cholecarcinomas, AFP for yolk sac tumors, and then I would check for. I think these labs are enough. I would go for CT scan brain in this patient because he has not had any investigation done before, and I would rule out any hydrocephalus because this is the complaint which the patient presented from. And if I find any pathology in the CT brain, I will ask for a MRI brain and MRI on the entire neural axis actually in this patient. Okay, so इसका अगर यू थिंक कि अगर जर्मिनोमा है तो अगर एएफपी भी नहीं है, अल्फा फीटोप्रोटीन भी नहीं बढ़ा हुआ, दीज आर द मार्कर्स, एंड बीएचसी भी नहीं बढ़ा हुआ, तो इट्स प्रोबेबली भी Sir, if the not। markers are not increased, then it can be germinoma. तो इसकी कोई सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी पता है आपको? Uh, I cannot, sir, recall it at the moment. Sorry, कोई sir. बस, मैं तो वैसे ही एक्स्ट्रा नंबर के लिए पूछा था, कोई नहीं। Yes, sir. सो अभी डॉक्टर मैजबीन, कैन यू पुट द एमआरआई स्कैन ऑफ दिस पेशेंट? Yes, sir. डॉक्टर, Dr. Babar? हाँ, really kind of you. Dr. Babar is screen sharing. जी, Yes, sir. very much, Dr. Babu, please. Thank you for Dr. sharing the Babu, screen. please, can you describe it? Yes, sir. Sir, this is CT scan brain of the patient, Danish, showing axial cuts from base to vertex. And this is CT scan brain plane. I can appreciate there is a gross ventriculomegaly, and fourth ventricle is compressed over this ventriculomegaly. And there's periventricular lucency as well with enlargement of temporal horns. And I can appreciate a hyper dense lesion at the level of pineal region. And I would like to see for any sagittal views to know its extent. It is compressing our third ventricle, and there is associated but posterior part of the third ventricle. It's in the lies in the quadrigeminal system, and there is associated ballooning the third ventricle as well. This is associated what's better? So there is some ballooning of third ventricle, and the lesion is in the quadrigeminal system. It's occupying the quadrigeminal area. The region. That's exactly third ventricle भी है, periventricular seepage भी है, सल्साए गाराए और जो है इसके Yes, sir. हैं। There is some calcification in the lesion as well.
That's think. what I wanted to ask. There is some calcium. Now, what does it tell you? Sir, calcifications. Sir, I don't know in this case. Calcification tells you this is Meningioma, something. benign, sir, Meningioma benign भी MRI disease. पे देखते हैं, but chances are it can be a meningioma, but it can be, that tells you that it's a long standing. It's slowly evolving because there it is calcified. Yes, sir. Geminoma में भी हो जाती है, इसमें क्रेनियोफ्रिंजियोमा भी हो सकता है, और दूसरा भी कुछ होता है. Let's see the MRI scan. Dr. Babar, can you put the MRI scan? Sir, this is MRI brain showing axial views, T1 weighted images of the same patient. And on T1 weighted images, the lesion is slightly, no, it's iso intense to the surrounding brain. And I can appreciate, oh, sorry, my screen. Oh, sorry. I can, Also compressing the. sir, it's compressing the third ventricle, and there is some associated hypo and hyper intensities in the lesion, mixed intensities in the lesion. So what are the structures that are hypointense on T1? Sir, hypointense on T1, T2 weighted images are calcifications, and hypointense on T1 and hyper on T2, that would be CSF clefts or some cysts. And if there is bleed, it can be hypointense on T1, T2 weighted images as well. T2 पे क्या है? Sir, the lesion is iso intense on the T2 on the T2 as well, showing areas of hyperintensities, and it seems to be rising from the quadrigeminal cistern, and it's going anteriorly into the third ventricle. And so that's it. I would like to see the contrast images of this patient. Contrast दिखा दे. ये तो contrast है. I think it's flare. This is contrast. वो flare है. Yes, so the on contrast the image, the lesion is homogeneously there is homogeneous contrast enhancement. There's contrast uptake in the lesion, and as the images are not, yes, yes, sir, there is contrast uptake in the lesion. It's homogeneous, and the lesion is So what do you think it is yes, on sir. contrast? It is homogeneously contrast enhancing. Sir, it can be a germinoma, and it can be a pineoblastoma. It can be both. And it can be a lymphoma too. Periventricular है, इसे भी हो सकता है. Yes, sir, It is it can be. contrast enhancing. ठीक Yes, है. sir. So now इसके अलावा भी कोई टेस्ट कर सकते हैं अब आप? How would you Sir, manage this patient? The patient has come to you. You are the boss. How would you manage this patient? yes, sir. I would get CSF, but I won't get CSF. I'll get serum like markers for this patient. I'll get MRI of the entire neuraxis to rule out any drop mets, and then I would treat the hydro first, sir, as the patient is presenting with signs of increased ICP. So you would put a shunt in first. Sir, I can put a shunt, and I can also do an ETV and get a biopsy for this tumor as well. We can do both. Do you think ETV would be easier in this patient? क्योंकि इसका third ventricle brainstem थोड़ा push आगे हुआ है. That is the right thing to do. I am not saying that, but it would. Yes, sir. I think with the curved and ventroscope like 30 degree or 70 degree, I think we can take a chance. But I Okay. would like to see for the sagittal view to look at the prepontine cistern in case it's compressed by the tumor before performing an ETV. But I think I will do VV shunt in this Dr. patient Babar, first there are to relieve the there are hydro. sagittal views as Scan well. देख रहे हैं.
इसमें I आपका can see the और भी cylinder. नजर आ Yes, रहा है sir. आपको? Yes, sir. Top पे नजर आ रहा है. Prepontine cistern is intact. I can not visualize the basilar artery well, but I think, sir, कि we पिट्यूटरी, can do both in this patient. Yes, sir. इसका पिट्यूटरी एरिया देखें तो उसमें भी कंट्रास्ट एनहांसिंग कोई चीज नजर आ रही है। Uh, yes, यू sir. There डोंट is हैव, contrast enhancement in the pituitary as well. कैपिटल नहीं है हमारे पास या? Yes, sir. I seen it. It's homogeneous and it's going into the supracellus cistern. So it looks like he has something in the pituitary area. It can be, sir, synchronous germ cell tumor. Uh, So I don't know the diagnosis. So if you can, how would you manage this patient? Sir, like I said, I would first do the relieve the hydro of the patient, and then I will tell the patient about the nature of the disease, counsel the patient's attendants, like his parents, and I would give them the option of biopsy. In case it turns out to be a germinoma, we can give him radio and chemo, and the patient would be fine, and we can follow him up. Otherwise, if the biopsy shows some other tumors, we will have to excise it as his young age, and we need to know the grade of the tumor, and according to the biopsy, we can If it is excise a the tumor. germinoma, so then you will put a, you have already done the ETV. You have taken a Yes, sir. biopsy. Would you take the biopsy at the same time? Yes, sir. I will take the biopsy at the same time. If I'm doing an ATV, if I'm doing a shunt, then for biopsy, I have stereotactic navigation option, I have the neuroendoscope option, and I have the open biopsy option in this case. ठीक है. I said you have done the ATV, but you are unsuccessful in taking the biopsy. Okay, sir. तो अगर आप इसका पिचुटरी भी देखें तो पिचुटरी में भी मुझे तो लग रहा है. If you look at it, sagittal में, the same, if you look at same intensity is showing it there and there. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So now, But yes, sir. from where would you take a biopsy? ETV से तो नहीं हुई आपसे. Yes, sir. We can take the biopsy from pituitary, but Then we can take a biopsy from the pituitary easily. yes, sir. If it is a germinoma, Yes, then sir. तो आप क्या करेंगे फिर? Sir, if it's a germinoma, we can give him chemo and radiotherapy, and the tumor responds very well to them, and we can follow up the patient. Okay. We don't I need to excise said it. germinoma, you have given him a 14-year-old, you can give him radiation therapy. What is the prognosis of germinoma? Sir, the prognosis of germinoma, I think it depends on the What is response to 5 years chemo and survival? radio. Sir, What is 5 year 5 years survival is good in survival? the What is 10 germinoma. years survival? I ये think, sir, 5 year survival was 70 to 80%, and survival is good if there is no metastasis and the tumor responds to the chemo and radio of the patient. I'm not sure about the 10-year survival. However, if it's not germinoma cell tumor and there's distant mets, then survival is poor. Okay. Simple germinoma में 10 years survival is more than 90%. Patient अभी Okay. तक survive कर रहे हैं. But yes, Yes, sir. non germinatus है. अगर non seminatus है तो फिर क्या करेंगे? Then we कौन will से have to, sir, subtype? rule out. I Sir, will if give you there, an extra marks. वो yes, sir. कौन सी subtype होते हैं? I will give you extra mark. Sir, there are yolk sac tumors, there are choriocarcinomas, there are teratomas, mature, immature teratomas, and there are, sir, यही होते हैं, I think. Tell me, why does the germinoma forms in the pineal region? Sir, during development, there are some germ breast cells, and they can later on, due to some mutation, develop into a tumor. They arise from the germ breast cells, I think. ठीक है. एक मिलता है Sertoli and Leydig cells क्या होते हैं? Sir, they are in the germinoma.
and they are cytiotropoblast cells, I think, sir. They secrete LH and FSH in the for puberty. ठीक है. तो अगर नॉन जर्मिनेटस है और वो जो सेमिनोमा नॉन सेमिनोमा उसमें फिर आप क्या करते हैं? Sir, that I don't know, sir. ठीक है. I think we excise that. You excise that. You excise आपका ये जो S- है टेस्टिकल या you excise the tumor? Sir, we excise the tumor. I'm not sure about the testicle, sir. चलिए I think we give chemo. We give chemo to the patient. चलिए ठीक है. Now tell me, I say this is a pineoblastoma and your boss says कि भाई आपने इसकी सर्जरी करनी है, हमें we have to take the tumor out. राजा साहब या हामिद साहब कह रहे हैं कि भाई हमने करनी है और हमने जो है supracerebellar infratentorial approach करनी है and you are the Yes, sir. main guy. So how would you do that? Sir, first of all, I would need to. आपके Yes, sir. पास है start from patient is prone, patient is Yes, sir. patient. Sir, I will put the patient in concorde position with bit of head flexion so that the cerebellum falls away from the cerebellum, so dissection can be easy. And I will also require adjuncts like CUSA, microscope, and I would also require SACP, MEP because the tumor is close to the brainstem. And after preparing the patients and patient and draping the patient, I will scrub the area. And sir, before first of all, I would need to know the location of the inferior cerebral vein uh, because I cannot see it in this scan if it's above the tumor or below the tumor. We can see there is a big Internal cerebral. उसमें sagittal में तो आपको नजर आ रहा है कि there is a black dot और ऊपर भी dot Sir, नजर आ yes, रहे हैं. it seems to be the internal cerebral vein. Okay, sir. I will put the patient in prone position and in concorde position. And after the adjuncts I have mentioned, I'll scrub the area and I'll start my incision just above the inion to C3 or C4. And I'll do the facial dissection, subperiosteal dissection. I will expose the inion Region कहाँ and से I कहाँ will, तक करेंगे बेटा? sir, 3 centimeter above inion and up to sir, C2 or C3. Because if I need pericranium, but sir, I will, if I have not passed any shunt in this patient, I will also mark my Fraser birth point. Okay, you would want to put And an EVD. yes, sir, if I have not done ETV or shunt in this patient, Okay. I will mark my Fraser birth point as well. And sir, I have not done shunt in this patient, then first of all, I'll make my burr at the Fraser point, which is 6 to 7 centimeter above inion, 3 centimeter lateral. And I will Would I you will not do put neuro EVD. navigation also for this patient? Sir, if I have the facility, yes, I would do navigation to एग्जाम facilitate में the तो आपके dissection. पास सारी फैसिलिटीज होती हैं बेटा. Yes, sir, I would definitely use navigation in this patient. ठीक है. Very good. Sir, You have okay, done sir, the after, incision. yes, given the incision, I have removed the fascia, I have removed the periosteum and pericranium and sit it in just case I need any flap. And I'll mark my burr holes. And I think in this case, my two burr holes would be above, just above, just at the level of inion, so that I can expose the transverse sinus. And I will take them laterally and down to the above foramen magnum. I don't need to go for foramen magnum in this case. 3 centimeters are down, and I will connect them with the craniotome, and I'll expose my superior limit will be torcula and transverse sinus, and my inferior limit can be at the level of foramen magnum. And I can give a semilunar shape incision. My dural base will be reflected toward the sinuses, and I will expose the superior surface of the cerebellum. And if इससे needed, पहले एक मिडलाइन में स्ट्रक्चर आएगा, उसको आपको टाई करना होता है. yes, sir, occipital sinus in this age. Yes, sir, I need to tie that. Bleed badly. Yes, sir, I will tie the occipital sinus
And if needed, I will withdraw some CS, evening incision. I will withdraw some CSF from the EVD, and if needed, from the foramen magnum as well. And if the cerebellum, I will make if the cerebellum sagged away from the tent, I will start my dissection. I will do my subarachnoid dissection, and I will preserve the veins because these are deep venous structures. If needed, I will sacrifice the precentral cerebellar vein. And after retracting the venous system and choroidal arteries, I will reach the posterior surface of the tumor, and I will coagulate it. I will cut it with the micro scissor or 11 number blade, and I will do internal decompression. And after internal decompression, I will dissect the हाँ, capsule of the. Yes, sir. आपको किस किस चीज आर्टरीज का और वेन का ख्याल रखना होगा? Sir, in this particular case, sir, basal vena proxenthal, vein of Galen, inferior sagittal sinus, internal cerebral vein. There can be lateral and medial posterior choroidal arteries as well in this case. And sir, ये चीजें. ठीक है, चले, आपने ट्यूमर निकाल लिया, आपने नेविगेशन से देख लिया, उसके बाद Yes, क्या sir. करेंगे? Sir, I will. हीमोस्टेट Yes, sir. I will make sure my hemostasis is well, and I have not damaged any structure. I will make sure of it, and I will remove. I would pull back, do a watertight closure. I will let the EVD remain in, and I will remove, close the fascia, close the skin, and come out. ठीक है बेटा, थैंक यू। Yes, So sir. how aggressive is this pineoblastoma? Pineoblastoma ज्यादा Uh, aggressive होता है या pineocytoma? Sir, pineoblastoma is grade 4 and pineocytoma is grade 1. Pineoblastoma is more aggressive than pineocytoma because it metastasizes early. बेटा, आपका टाइम अब खत्म होने लगा है, 2 मिनट रह गए हैं। आई थिंक यू Yes, हैव sir. डन वेल। Thank you, sir. Speaking is quite good, you know, लेकिन the thing is कि आप ऑफ टेंडम चले जाते हो। Yes, sir. Probably in the examiner wouldn't have given you कि आपने जब Yes, frontal sir. I lobe should और have said parietal it. lobe के बाद Yes, sir. तो that was a disaster। आपका सारा काम वहां पे है, तो मेक श्योर whatever you say, जब आपकी बात हो गई हुई है, Yes, sir. your line of focus is one thing, saying less is better than saying more। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. you should, whatever you say, you should know why you are saying it, क्योंकि जैसे ही आप ऑफलाइन जाएंगे, Yes, sir. आपको वो जब आपसे हो गया कि मिड लाइन स्ट्रक्चर हैं, तो देन इसका मतलब है कि भी आपने रटा लगाया, वो आपको पता कुछ नहीं है, आपकी Yes, sir. इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, Yes, sir. उस साइड पे जा रहे हो। अदरवाइज आपकी नॉलेज इज क्वाइट गुड। बेसिकली वी वांट टू नो कि आपको कितना आता है, ये नहीं कि आप तो सारी Yes, sir. चीजें आनी चाहिए। यू नो द बेसिक्स, ओके। आपका हिस्ट्री टेकिंग वाज क्वाइट गुड, आपको सारे वो पता थे, तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपका अच्छा था, लेकिन आपको उसको इंटरप्रेट भी करना आना चाहिए। जी सर। जी सर। जब आपको थैंक यू सर। आइडिया हो गया था कि ये, मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि ये टेक्टम के ऊपर प्रेशर है, सारा कुछ है, यस सर। so your focus should be around that, so that you are यस सर। able to take a hint, grasp it, interpret it, and you can present it. That is the thing यस सर। examiner wants to see, that he's a smart boy and he's going to do, he would treat the patient well। ठीक है, your यस सर। knowledge good, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, you know it, but आपको अपने आप को थोड़ा होन करना है कि वो जो चीजें हैं, अगर यस सर, सोच के बोल रहे हैं है इंशाल्लाह तो सर। उसके मुताबिक आपको थोड़ा वो करना है। और वंस, यस सर। अगर से मैं सब रेजिडेंट्स को बताता हूँ कि अगर ब्रेन का पेशेंट है तो स्पेंड 80% ऑफ द टाइम ऑन द ब्रेन एंड 20% ऑफ द टाइम ऑन द स्पाइन। अगर स्पाइन का है तो स्पेंड 70% टाइम ऑन द स्पाइन एंड 30% टाइम ऑन द ब्रेन, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। ठीक है, यस सर। आपको हो गया तो आप, यू टेल द एग्जामिनर कि भी मैंने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, बट यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग टू मच टाइम, क्योंकि आपके पास ओनली 30 मिनट्स हैं अभी। आप यस सर। विदाउट
डूइंग द एग्जामिनेशन आपके 30 मिनट्स हो गए थे, तो आपको इस यस सर। सारी चीजों को विद इन 30 मिनट्स करना है, क्योंकि एग्जामिनर वुड नॉट गिव यू एन एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि उसके बाद यस बुक सर। में आना होगा। ठीक है, तो अगर जो भी आप जितना भी टाइम तो आप यू वुड मिस आउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस जो कि एग्जामिनर ने देखनी यस है। सर। ठीक है, तो आपको अपना यस सर। टेक्निकल एग्जामिनेशन को थोड़ा होम करना होगा, आपको इंटरप्रिटेशन को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, बाकी आपकी जनरली हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकल यस सर। एग्जामिनेशन आपको पता है उसको थोड़ा। ठीक है बेटा, यस सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, थैंक यू now, सर। Thank you so much, Dr. Matson. And sir, थैंक यू thank you सर। so much for your feedback. Sir, shall we continue Uh, to second case? जी Sir, जी before starting the second case, I would like to ask a question from the first case, if you may allow. जी 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 डॉक्टर। Sir, one of the candidates, I just wanted to ask, आपने बीच में डॉक्टर मुत्सिम से पूछा कि सेमिनोमेटस वर्सेस नॉन सेमिनोमेटस उनकी हाँ, मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी इस बारे में नहीं पता, आप थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दें तो तो वो better एक हो। तो वो जो इस यंग एज में टेस्टिकुलर ट्यूमर होते हैं, वो जी सर। उसमें इसलिए मैंने पूछा था कि भाई अगर पाइनियल रीजन में ट्यूमर है तो आपको ये फर्स्ट थिंग इन 14-year-old बॉय आपको यू वुड थिंक ऑफ जर्मिनोमा जी सेमिनेटस। सर। जी सर। नॉन सेमिनेटस हैं तो वो टेस्टिकल से आएंगे। ठीक है, तो यू वुड लाइक टू सी, इन्होंने सारे एग्जाम की, अगर आपने इनका गौर से सुना, इन्होंने इंग्वाइनल रीजन का इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स बताए। ठीक है, तो इसलिए आई थॉट के ही इज डूइंग अ थॉरो एग्जामिनेशन, तो ही प्रोबब्ली वुड नो कि टेस्टिकल को भी अगर मैंने इसको हिंट दिया है तो वो भी देख ले। ठीक है, ठीक है सर। तो तो सर अगर ये मतलब आ जाते हैं नॉन सेमिनोमेटस तो उसमें हम क्या टेस्टिकल्स को भी रिमूवल का वो उसमें वो सबसे होता ज्यादा है? कॉमन तो वहां से ही है ना बेटा। हम्म। ठीक है सर। दैट वुड टेल एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर वेरी नॉलेजेबल। आई डोंट थिंक वो इस बेस पे आपको फेल करेगा, लेकिन ही हम्म। गिव यू एन एक्स्ट्रा मार्क फॉर दैट, आई एम श्योर कि यू आर वेरी। देखें आपको एग्जाम में देखिए आप गो टू द फोर, आपको जाके 4 शॉर्ट केस करने हैं, एक लॉन्ग केस करना है। शॉर्ट केस और लॉन्ग केस एक दूसरे को थोड़ा बहुत कंपनसेट करते हैं। ठीक है, जी सर। यू कांट बी डूइंग रियली वेल ऑन ऑल द जगह, लेकिन जहां आपको चांस मिले, अगर एक आपको, उनके पास 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो है कि गुड, एक्सीलेंट, मार्जिनल फेल एंड क्लियर फेल। ठीक है, मोस्टली जब एग्जामिनर इज नॉट वेरी श्योर तो यहाँ आपको मार्जिनल पास देगा या मार्जिनल फेल देगा। हाँ, अगर उसको लगे कि आप डिजास्टरस हो, जो कि बहुत कम लोग होते हैं, तो वो आपको क्लियर फेल दे देगा, उस पर कुछ नहीं हो सकता। वो अंटिल वो ठीक। आपको पता होगा, उसी वक्त पता होगा कि यार आई हैव डन अ डिजास्टर, मेरा क्लियर फेल है। आमतौर पे ज्यादातर लोग आपने दरमियाना किया है तो वो सेटिस्फैक्ट्री दे देंगे। अगर आपने अच्छा कर दिया है तो आपको वो एक्सीलेंट या हाई पास देगा। हाई पास जो होगा वो आपके मार्जिनल को दूसरी जगह पे कंपनसेट कर देगा। ठीक है, ठीक तो है। इसलिए वेर एवर यू गेट अ चांस, जो भी आपके अच्छा आ जाए, तो जहां भी आप बेहतर कर सको तो यू शुड ट्राई टू गेट एक्स्ट्रा मार्क। तो वो आप एक आध जगह आप थोड़ा सा कम भी हो गए हो तो उसको वो कंपनसेट कर देगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। देखो सारे एग्जामिनर मुश्किल नहीं होते, 95% आर वेरी गुड। ठीक है, दे जनरली आई सी कि मैं देता हूँ वो बहुत काफी जगह क्लियर पास देते हैं, अच्छा पास देते हैं। तो वो इसलिए होता है कि वो कहते हैं कि ये दिस बॉय इज गुड। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया है, बट आई थिंक ही इज रियली गुड, ही शुड पास, तो वो आपको हमेशा एक्सीलेंट देगा। ठीक है, तो वो आप ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। डॉक्टर बाबर दूसरा केस शुरू करें।
जी, डॉक्टर शाहरुख, जी सर। दूसरा केस स्टार्ट करें। जी जी करें सर। ओके, सो दिस इज योर सिनेरियो एंड आई विल बी योर पेशेंट। ठीक। जी सर स्टार्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब। जी जी, स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। चलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम मेरा सलाम। नाम डॉक्टर शाहरुख है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा जी, अब्दुल्ला, आपकी उम्र क्या है? 40 साल। 40 साल। कहाँ से हैं आप? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से आए हैं, ठीक है। मुझे बताएं, आप शादीशुदा हैं? जी। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? तो 2 हैं। आप सीधे हाथ से अपना वजनी काम करते हैं, उल्टे हाथ से, लिखाई किस हाथ से करते हैं? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से करते हैं। पेशा क्या है आपका, क्या काम करते हैं? मैं ऑफिस जॉब करता हूँ, क्लर्क हूँ। ऑफिस जॉब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल में आप ओपीडी से आए थे, इमरजेंसी से आए थे? सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है। यहाँ हॉस्पिटल में ओपीडी से आए थे, इमरजेंसी से आए थे आप? सर दर्द की वजह से। अच्छा, ठीक है। मुझे बताइएगा कि आपका सर दर्द कितने अरसे से है, आपने बताया 2 माह से। ये काफी अरसे से है, तकरीबन 1 साल से है, पर जो इस पे शिद्दत बढ़ी है 2 महीने से। ठीक है, 1 साल से था, 2 माह से शिद्दत ज्यादा है, ठीक है। मुझे बताइएगा सर दर्द के अलावा और क्या मसला है? आपने बताया शायद आपकी कमजोरी है, इस तरह का कुछ है? जी, उल्टे पाँव में जो है मुझे अभी कमजोरी महसूस होना शुरू हो गई है। ठीक है, मुझे बताइएगा सिर्फ उल्टे पाँव में है या सीधे पाँव में, सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में, बाकी किसी पाँव हाथ में नहीं है, सिर्फ उल्टे पाँव में है? जी, सिर्फ उल्टे पाँव में है। ठीक है। मुझे बताइएगा कोई सूंघने में कोई मसला होता है, कोई चीजें सूंघे ना आपको, ऐसा कोई मसला कभी हुआ? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं। कोई सुनने में कोई मसला हुआ, कान का कोई मसला पुराना? नहीं, कान का भी कोई मसला नहीं। मुझे ये बताएं कोई देखने में कोई मसला हुआ पुराना आपको कभी? नहीं, नजर भी बिल्कुल ठीक है मेरी। मुझे बताएं पुराना कभी कोई झटके का मसला हुआ, हाथ पांव मुड़ गए हो, मुंह से झाग गई हो, छोटे पेशाब का खारिज हुआ हो, ऐसा कभी कोई हुआ? नहीं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपको पुराना कभी कोई मुसलसल बुखार वाला मसला तो नहीं रहा, खानदान में कभी किसी को या आपके आसपास जानने वाले को कभी किसी को टीबी का मसला तो नहीं रहा? नहीं, ऐसा भी नहीं। चेहरे में कभी कोई पुराना लकवापन तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, पुराने कुछ माह में आपका वजन ज्यादा तो नहीं गिरा, 5, 10, 15 किलो आपको महसूस हुआ, आपके कपड़े खुले हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, वजन भी सेम। खानदान में किसी को आसपास में कोई कैंसर का मसला तो नहीं है, या आपकी खांसी से कभी खून आया हो या बड़े पेशाब से कभी खून का खारिज हुआ हो, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस्म पे कोई धब्बे, फोड़े, फिंसियाँ, गिल्टियाँ, ऐसा तो कोई मसला नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपने अपने मुझे 2 मसले बताए हैं। आपने बताया कि सर में दर्द है और उल्टे पाँव में आपकी कमजोरी है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में कुछ तफसीली सवालात आपसे करूंगा, आपका ताउन मुझे दरकार होगा, ठीक है, इजाजत है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अब्दुल्ला साहब, क्या जो आपका सर दर्द है वो किस तरफ ज्यादा होता है, आगे वाले की तरफ सर में ज्यादा होता है या पीछे तरफ ज्यादा होता है? मुझे पूरे सर में दर्द रहता है। आपको पूरे सर में दर्द रहता है। मुझे बताइएगा इस दर्द की शिद्दत कितनी होती है, कितना शदीद होता है, कम सा होता है, माड़ा माड़ा होता है, ज्यादा होता है? पहले ये बर्दाश्त के काबिल था, लेकिन पिछले 2 महीने से ये शदीद बढ़ गया है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि ये किस टाइम ज्यादा होता है, सुबह टाइम, दोपहर टाइम, रात टाइम? सारा दिन ही रहता है, पर सुबह के टाइम पे ये ज्यादा होता है। ठीक है, सुबह के टाइम पे ज्यादा होता है, तो मुझे बताइएगा इसके साथ भी कोई मसले मसाइल होते हैं या सिर्फ दर्द ही होता है, साथ कोई उल्टी आती हो, कोई और मसला होता हो, ऐसा होता है? जब शदीद दर्द बढ़ जाता है तो फिर बाज़ औक़ात उल्टी भी हो जाती है। ठीक है। एक सिर्फ उल्टी, जब आपको आपने बताया उल्टी सिर्फ और सिर्फ सर दर्द के साथ हुई है, तो ये उल्टी वैसे भी आ जाती है आपको? नहीं, सर दर्द के साथ ही आती है। सर दर्द के साथ ही होती है, और दिन में कितनी दफा उल्टी आ जाती है आपको, मतलब
आती रहती है या जब जब सर दर्द होता है उसी के साथ ही? ठीक है। ये पिछले हफ्ते में मुझे एक दफा ही होगी। ओके, मुझे ये बताएं कि जो सर में दर्द होता है वो सर तक महदूद रहता है या पीछे गर्दन में भी जाता है, कमर में भी जाता है, इस तरह का कोई मसला मसाइल होता है? नहीं, ये सर में ही रहता। ठीक है, मुझे बताएगा कि सर का दर्द खांसने से, छींकने से, इस तरह से कोई उठने से बैठने से ज्यादा या कम होता है? नहीं, ऐसा तो मैंने महसूस नहीं किया। मुझे बताएगा जब आपका सर दर्द ज्यादा हो जाए तो आप क्या करते हैं? कुछ काम चीज करते हैं जिससे कम हो जाए? कोई दवाई शवाई लेते हैं या खुद ही अपना टाइम लेके वो ठीक होता है? मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ या दवाई लेता हूँ, उससे फिर ये कम हो जाता है। उससे कम हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ आपने बताया कि उल्टी होती है और इसके अलावा और कोई मसला नहीं होता, ऐसे ही है? ठीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मुझे हाथ लगा के आप बता सकते हैं किसी एक जगह पे, या ओवरऑल जैसे आपने बताया कि पूरे सर में ही होता है बीच से शुरू होकर, ऐसे ही है? कोई मखसूस जगह नहीं है, पूरे सर में दर्द रहता है। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, मुझे बताएगा कि आपने मुझे ये भी पूरे बताया पूरे कि सर में दर्द रहता आपके उल्टे पाँव में कमजोरी है, तो मुझे बताएगा कि आपके सिर्फ पाँव में कमजोरी है या साथ साथ बढ़ रही है, पूरी अब टांग कमजोर है आपकी उल्टी वाली? हेलो? हेलो, आवाज नहीं आ रही अब। हेलो? आ, आ, बाबर साहब, कितनी कमजोरी है? सिर्फ फुट ड्रॉप है या पूरी टांग में कमजोरी है? है। डॉक्टर डॉक्टर को बाबर, आपकी आई कैंट आवाज। हियर यू। बाबर साहब, आपकी आवाज खत्म हो गई है। Sir, I can volunteer. There are some जी जी connectivity बेटा। issues. जी, थैंक यू डॉक्टर माजुबीन। जी जी अब जी डॉक्टर शाहरुख जी पूछिए मुझसे। मैं ये पूछ रहा था कि सिर्फ पाँव में कमजोरी है या पूरी टांग आपका जो है वो कमजोर हो गई है, उल्टी वाली साइड की? नहीं, ज्यादा पाँव की कमजोरी है। ठीक है, मुझे बताएगा सिर्फ पाँव की कमजोरी, पाँव और टांग की कमजोरी है, साथ में कोई सुनपन भी होता है? कमजोरी ज्यादा होती है, सुन नहीं होता, कमजोरी होती है। ठीक है, कमजोरी कितनी कोई है कि आप बिल्कुल मतलब चल फिर नहीं सकते, या अपनी चप्पल चप्पल पहन लेते हैं और वो पाँव से निकल जाती है चप्पल? चप्पल कितने पाँव से हद तक निकल कमजोरी जाती। है? जी जी, चप्पल पाँव से एक दो दफा ऐसा हुआ है, निकल गई है। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि जो सर दर्द का मसला और उल्टे पाँव की कमजोरी आपने बताई है, ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं टाइम के साथ या ये एकदम बढ़े हैं? ऐसा आहिस्ता तो नहीं आहिस्ता। हुआ कि कहीं रात को सोए हैं सुबह उठे एकदम से मसले मसाइल हो गए आपके? या आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ रहे हैं, ऐसे ही है? नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़े। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताएगा कि पुरानी कभी कोई चोट तो नहीं लगी है आपको कमर पे? नहीं मुझे बताएगा कभी कोई पुरानी गर्दन पे तो कोई चोट नहीं लगी है आपको? नहीं। ठीक है, टांग में कमजोरी है, सुनपन का आपने बताया। मुझे ये बताएं कि कोई खिंचाव वगैरह जनरली महसूस होता है आपको, या खिंचाव नहीं महसूस होता टांगों में? जी जी, उल्टी टांग में ही खिंचाव महसूस होता है। उल्टी टांग में खिंचाव महसूस होता है, ठीक है। इन मसलों के अलावा आप मुझे कोई और अपना मामला बताना चाहते हैं, या मैं कुछ और तफसीली सवालात आपसे कर लूं? नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है जो आप पूछें। और ठीक है, आपसे कुछ दीगर और सवालात मैं पूछूंगा, आपका ताउन दरकार होगा, ठीक है अब्दुल्ला साहब? जी जी। जी, मुझे ये बताएगा कि आपके साथ कोई अभी है, मतलब आपके वालदैन या कोई नहीं, रिश्तेदार जिनसे मैं पूछ सकूं कुछ? अब मैं नहीं है? अकेला हूँ जी। अच्छा अच्छी, मुझे बताएगा कि आपके मिजाज में कोई तब्दीली तो नहीं है? ये ऊंच नीच कोई बातें कर दें उलट सीधी जो ना करनी हो किसी महफिल में इस तरह की, या कुछ छोटे पेशाब में खारिज हो जाए आपको पता ना लगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ नहीं, ऐसा पिछले नहीं है। कुछ अरसे में? नहीं नहीं। ठीक है। अपने कपड़े पहन लेते हैं या उतारने में कोई मसला, बटन बंद खोलने में, ऐसा तो कोई मसला नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ही पांचे में आप दोनों टांगे डाल दें, आपको पता ना चला हो? नहीं हुआ सर। रोशनी के कोई छल्ले चमकारे आंखें के सामने कोई काले गोल दायरे आ गए हों, नहीं आपको इस तरह की कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं। नहीं ठीक है। आपको अपने बहन भाई माँ बाप के इनके नाम तो कभी नहीं भूले? अपने घर का रास्ता, घर में बैठे हो ऐसा पता चला हो कि घर कहाँ बैठा हूँ मैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? कोई पास की यादाश्त है, दूर की यादाश्त है, ऐसा कोई मसला नहीं है? नहीं। ठीक है, आपने मुझे पहले ही बता दिया कि आपको झटकों वाला, मिर्गी वाला, हाथ पांव टेढ़े का ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसे ही है ना? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। जी ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आपको ऐसे तो नहीं महसूस होता कि आपके हाथ पाँव का साइज बड़ा हो रहा हो, आपके बाल खुरदरे हो रहे हो, आपकी जबान का साइज बड़ा हो रहा हो, या सोते हुए खराटे महसूस होते हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता? इस तरह कुछ नहीं होता।
ठीक है, आपने बताया कि जिस्म में कभी कोई पुराने धब्बे फोड़े फिंसियाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो ये नहीं मुझे बताएं कि पेट के आगे वाले साइड पे कोई आपको लकीरें वगैरह आती महसूस तो नहीं हुई? नहीं नहीं ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप बेड से उठे हो, आपको चक्कर आ गए हो, आप एकदम से बैठ गए हो, हल्का हल्का फील हुआ हो? नहीं ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं। ठीक है। Sir, I would like to ask a private question in the ear of the patient regarding the impotence, but since we are not in the physical environment, I would ask that He's question as not well. important. I would ask that question as well in the ear of the patient. Okay. So, अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताएगा कि आपको ऐसा तो नहीं कभी होता कि सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में मसला होता हो या ऊपर देखने में मसला होता हो? नहीं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं मसला कभी हुआ? ठीक है, मुझे ये बताएगा कि कभी आप सीधे चल रहे हो, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि टांगों से सिर्फ आपकी जान खत्म हुई हो? बेहोशी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसा महसूस हुआ कि टांगों से जान खत्म हुई हो और आप गिर गए हो धड़ाम करके, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं गिरा नहीं, लेकिन वो कमजोरी जो एक टांग की उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मसला होता है चलने में। वो तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है ना, इससे जी पहले जी। का इससे मतलब एकदम पहले से ऐसा जान खत्म हुई हो आप गिर गए हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ? नहीं नहीं, एकदम ऐसा नहीं हुआ कुछ। ठीक है, जरूरत से ज्यादा ठंड या जरूरत से ज्यादा गर्मी तो नहीं होती, जैसे आजकल के मौसम में आप 2-3 रजाइयां लेके लेटे हो, इस तरह तो कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं, चेहरे का या जिस्म का धड़ का एक हिस्सा सुन तो नहीं है आपका? नहीं सुन महसूस होता हो आपका? नहीं ठीक है, उस टांग का नहीं, उस टांग के अलावा वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि सुनपन तो नहीं है आपको? नहीं नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएगा कि आपको ज्यादा भूख, ज्यादा प्यास या ज्यादा पेशाब, इस तरह की कोई मसले मसाइल तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा तो नहीं होता कि आंखों की पुतली आपको महसूस हो के हिल रही है, आपको चेहरा टेढ़ा करके देखना पड़े, या नहीं आप अपनी टांगे जो हैं वो खोल के आपको चलनी पड़ रही हो? नहीं ऐसा नहीं। ऐसा महसूस नहीं होता आपको? ठीक है, मुझे बताएगा कि पहले कभी कोई पुरानी सर्जरी वगैरह तो नहीं कराई आपने? नहीं हुआ। पुरानी सर्जरी नहीं कराई, किसी चीज के लिए कोई शुआएं वगैरह तो नहीं लगवाई आपने? नहीं ठीक है, कोई दवाई वगैरह अगर कभी इस्तेमाल की हो या कोई खाने पीने की चीज हो, इससे कभी एलर्जी तो नहीं है आपको? नहीं एलर्जी नहीं है, सर के दर्द की दवाई ले लेता हूँ जब ज्यादा होता है तो। ठीक है, उससे कभी कोई एलर्जी तो नहीं हुई? नहीं ठीक है, मुझे ये बताएगा कि कोई नशा अवर चीज इस तरह की तो कोई आप इस्तेमाल नहीं करते पुरानी? नहीं ठीक है, कभी खून तो नहीं चढ़ा आपको? नहीं। ठीक है, कोई कमर का दर्द का, वैसे आपने बताया पहले कभी कोई मसला था अभी नहीं, अपने घर में रहते हैं, गुजरबाश ठीक हो जाता है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है जी। सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इफ यू श्योर, अलाउ मी। आपके उनके 15 मिनट हो गए आपके। जी। ओके, अब्दुल्ला साहब, आपकी बीमारी के मुतालिक अब आपका मुआयना करना है, उम्मीद है आप हमारे साथ तावन करेंगे, ठीक है जी जी? जी जी। ठीक है सर, आई वुड check the first of all I would check the pronator drift of the patient. I would tell the patient to keep his eyes closed and keep his arms steady in front of me, just to rule out if I'm dealing with a spinal pathology or a cranial pathology. Okay, after that, then I would start with the GP. Should I skip GP or do GP? सॉरी, जीपी क्या? आप जनरल फिजिकल General एग्जामिनेशन? physics, जी सर। Should I? यू कैन स्किप इट, कोई मसला नहीं। Okay, then I would do the lobar inquiry. I would check for the frontal release signs. I would check for the palmomental reflex. I would check for the snout reflex. I would do the glabellar tap in order to localize my pathology if it दे is in आर the frontal region or not. Hmm. ग्रास रिफ्लेक्स, दे आर जी नॉट। sir. नॉट Non-significant. Okay. Okay, then I would move on to the parietal. Then I would check for any agraphia, calculia, left to right dissociation, finger agnosia. I would check all those. If any of those is positive, sir, please. You none can. of this positive. Okay, I would make the patient understand and learn three things, like kalam kursi pankha. Then after 2 to 3 minutes, I would check the recent memory of the patient. Apart from that, I would ask the patient if he can remember the name, remember the date of the Independence Day of Pakistan, to check for the distant You check memory. the recent So, पेशेंट so आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब्दुल्ला साहब, मुझे बता सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त 1947। ठीक है, आपको अपनी तारीख पैदाइश याद है? जी जी। बता सकते हैं? 14 सितंबर 1882। ठीक है, अच्छा, मैं आपको तीन चीजें याद करवा रहा हूँ, कलम कुर्सी पंखा। तो थोड़ी देर तक जो है इंशाल्लाह आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है? जी जी। चलें।
ठीक है sir, then I would move on to the cranial nerves examination. I had already checked the pronator drift. Sir, is there any positive finding in the pronator drift? You can say yes, slight. Which one, sir? Left or right? Left side. Okay, left it further. Okay. Sir, then I would start with the cranial nerves examination. First of all, will be the olfaction. There are three components to olfaction, which I'll be checking. First of all, I'll be checking the nasal patency. I'll make the patient look up, shine a torch into both of his nostrils, check to see if there is a patency of the nostrils. Apart from that, then I would take a cotton piece and tell him to blow out on the cotton piece. And then I would make the patient's eyes close and then bring out a perfume or a bad odor from the side of my hand and Olfactory is normal. okay, olfaction is normal. Then I would go on to check the second cranial nerve. I would check the five components of the cranial nerve 2, which will be the visual acuity. I would make the patient, first of all, I would ask the patient if he uses the glasses or not. If he says that he uses the glasses, then I would make the patient wear his glasses first to correct the refractive error and then start with the cranial nerve 2 examination. Then I would ask the patient if I can see how many fingers I'm holding in front of him. If he can read that, then I would put the Snellen chart and ask him to read what is on the Snellen chart. Then I would check the opposite eye and close the contralateral eye. Check the visual acuity and then check the visual field by the confrontation method. Uh, if he can see the finger swinging or it is still, I would like to see if the patient is having any homonymous hemianopsia or any bitemporal hemianopsia or any type of visual field defect which I might be expecting in this patient. And Vision. apart, vision is all fine. जी, Okay. Then I would do the light reflex of the patient, direct and the consensual light reflex. Apart from that, I would do the swinging flashlight test as well. Then I would do the fundoscopic examination. I would like to see if the patient has any papilledema or not. So the patient's papilledema नहीं है. papilledema nahi hai. Okay, sir. Then I would go on to check the extraocular movements. I would, in the extraocular movements, I would check the 3, 4, 6 cranial nerves. I would separately check for the superior oblique as well. Apart from that, then I would bring the finger close to his eyes to check for the accommodation reflex as well. Then I would start off with the cranial nerve 5 examination. Sir, the extraocular movements are the normal? जी जी बिल्कुल. Okay, then I would go on to proceed with checking of the fifth cranial nerve. I would first of all check for the corneal reflex. Then after that, I would check the motor component of the fifth nerve. I would ask the patient to steadily hold and open his mouth against resistance, then turn his mouth to the side, to the right and to the left to check for the muscles. Apart from that, I would tell the patient to bite and check his masseter. And then I would check the facial sensations in the V1, V2, V3 territory. Apart from that, I would do the jaw jerk on the one side and then do it on the other side as well. So, sir, is the fifth nerve normal? Fifth nerve is normal. Okay, then I would go on to proceed with examination of the basal cranial nerves. I would go on to check the seventh cranial nerve. I would tell him to clench his teeth for me to see if there is any upper motor or lower motor neuron type facial palsy so that I can localize my lesion to that sort of pathology. After that, I would go on to check and tell him to puff his mouth and then tell him to not let me break the puff. After that, I'll tell him to steadily and forcefully close his eyes and not let me open it. Then I will tell the patient to frown and I'll check his frowning. Apart from that, I'll ask the examiner permission if I can check the taste sensations as well if he allows me. So, sir, is the seventh nerve normal? Normal, sir. Okay, then I would go on to check the eighth nerve. I would inspect the ears of the patient and counsel him that I'm going to speak something in your ears and tell me if Eighth you is hear. normal. Okay, eighth is normal. Okay, the Sir Weber's and Rani's, they are also normal. Should I skip? Normal. Okay.
Then I would go on to check the 9th and the 10th cranial nerves. I would tell him to turn to the side and cough for me. I would check if there is any disturbance in his voice quality. I would check if he can cough well. Then I would tell him to open his mouth and say ah for me. And then I would depress his tongue and check the position of the uvula, if it is centrally or if it is center or deviated to one side. So that might also give me a clue if there is any involvement of the 9th or the 10th cranial nerve. Sir, can you please tell me if there is 9th or 9, 10th? 10, 11, 12, they are normal. Okay, 9, 10, 11. Okay. Then I would move on to the examination of the lower limb. Um, uh, then I would ask the patient first if you are having any pain in the lower limbs, you can inform me. If he is not having any pain, that I would ask the patient permission if I can raise his uh, raise his shalwar or whatever he's wearing. Then if he allows me permission, I would expose him. I would ask the examiner if the ideal examination exposure is up till the umbilicus. If he allows me, then I will expose him up to the umbilicus. Then I would shine a light and look for any fasciculation, scar marks, stria, or pulsations or any visible deformity that might be there. And if there, I can ask question from the Yeah, patient. none is there. Koi nahi hai. Okay, none is there. Okay, then I would tell the patient to relax a little. After that, I will just hold his left lower limb first, because that is the one involved, and I was focused my examination on the left lower limb. Then after the inspection, I would check for any tenderness, and I would check for the distal pulses. I would tell the patient to relax. I would hold his left leg steady in my arms, and I would rotate and then check for any pain in the other joints. I would do the Faber's test, and then I would check for clonus. They And are if there is normal. any, sir, the clonus is also negative. Clonus thoda sa lag raha hai. Okay, sir, only in the left or on the right as well? Left pe. Okay, clonus, sir. Okay, clonus is positive, and then after that, I would check for the power of the patient. The power, I would compare it one by one. I would check for the dorsiflexion of the left, then I would check for the dorsiflexion of the right. Then I would check for the plantar flexion of the left, plantar flexion of the right. I would check for the knee extension of the left, and then the knee extension on the right. I would check for the hip abduction on the left. Yes, hip abduction, and then hip flexion on the left, hip abduction and flexion on the right. So, sir, is the Left foot पे the dorsiflexion में थोड़ी कमजोरी है. okay? Extension में इतना नहीं है. वो hip flexion पे 4+ है. 4 O लिखे plus. हुए हैं. Okay. Okay, sir. And only on the dorsiflexion and hip flexion, there is 4/5. Dorsiflexion is 2 की power है, 2 to 3. Hip flexion पे ठीक है sir. Right बिल्कुल normal है sir. Right normal है. ठीक है sir. Then I would go on to do the reflexes of the lower limbs. But one thing in my mind, I'll be careful to do comparison side by side. I would check the left, and then I would do the right on the same level. I would check for the knee jerk on the left, then the knee jerk on the right. Then I would check for the ankle reflex on the left and the ankle reflex on the right. Sir, can you tell me? They're slightly brisker on the left side. Plantar Okay. is थोड़ा सा शक है कि आप going है left side का. जी ठीक है sir. Then I would check for the abdominal reflexes, the superficial reflexes, and the cremasteric. I would ask for permission from the examiner if he allows me. But if not, I would just go on to check the abdominal reflex after seeking permission from They the are patient. okay. Okay. Then sir, I would do the sensory system examination and any pathology related to the spine or the brain. If I can find a sensory level, then I would shift my focus onto the spine. If I cannot find my sensory level, then I would shift my focus to the brain, since the patient is having other complaints of the brain as well. So I would check the L4. I would compare left from right. I would check L5, left, right. I would check S1, left, right. And then I would go on moving up. So, sir, am I finding any sensory level or not? Sensory level नहीं है कोई. Okay, so this reinforces my decision that it might be something in the brain. Then I would
turn the patient around. I would ask if he is having any problems with defecation. I would check the sensory level of the anal sphincter. So that is fine. I guess that might be fine. And then That's fine. apart from that, I would make the patient walk. I would make the patient walk, but when he's coming back, I'll ask him to walk in a form of tandem way to check the cerebellar tandem gait side by side. And then I would make the patient sit. I would expose the back of the patient and examine the back as well. I would make the patient lie steady and relaxed. Then I would tell him to steady his arms for me, as I would like to do the upper limb examination now. When I'm doing the upper limb examination, I would check for the inspection. I would do the inspection. I would shine a torch at light. I would check for fasciculations. I would check for any visible scar marks, striae, pulsation, or any visible deformity of the upper limbs. And then after that, I would, sir, do the palpation. I would check for any tenderness, temperature. I would check the pulses, the radial pulse. After that, I would check the bulk of the patient as well, the lower limb and the Upper upper limbs limb. are normal. All are normal, sir. Both Everything is sides normal. जी दोनों साइड normal है. Mother, should I explain the rest of the upper limb examination or should I skip it? मैंने जब कह दिया नॉर्मल है तो आई गिविंग यू, क्योंकि आपके पास आधा घंटा पूरा हो गया, तो आई एम गिविंग यू अ चांस के नॉर्मल है. Okay, okay. जी सर. ठीक है sir. So I've examined the upper six, lower six, the so now I will move on to examine the cerebellum, sir. I would do the finger nose test. I would do the dysdiadochokinesia. I would tell him a word, kustuntunia. I would say to repeat it twice for me. By this, Cerebellar I'll signs are okay, Okay, the cerebellar signs normal. are also okay. They're also negative. Then I would check for the somae. If any of the somae signs are positive, the Brudzinski or the Kernigs, I would check for any systemic signs. I would do the auscultate the chest. I would do the abdominal examination, and so that would be the last of. General physical examination is normal too. Okay, ठीक so है. sir, that would be concluding my examination. ठीक है. Now you have concluded your examination. You have 1 minute to gather your thoughts, and about thoughts gather कर लेते. So whenever you are ready, let me know. We can start. जी sir. ठीक है sir, we can start whenever you say. जी sir. ठीक है. Based on your history and examination, where do you localize the lesion? Okay, sir, history and examination both? हाँ ना, आपने दोनों ही करी है ना बेटा. Okay, जी sir. Sir, based on my history and examination and amalgamating all my findings, I think it is most likely a pathology involving the brain, first of all. And when tunneling my vision, I think it's a pathology involving the supratentorial compartment of the brain. And further tunneling my vision, I think it's a pathology involving the right-sided supratentorial region of the brain. Where in right-sided supratentorial brain? Sir, according to my findings, I think it is right-sided supratentorial, right frontal, sir. You think it's right frontal? Yes, sir. What are the symptoms and signs of the right frontal lobe? Sir, there are certain examination findings which are in support of my diagnosis. Like Sir, the left-sided pronator drift patient I asked in the beginning, that was I said positive. slide, ठीक है. देखिए Uh, इसमें main दो big finding है. One जी is सर. हाँ headache. जी. हाँ Other जी, is हेडेक भी है left एंड lower साथ में limb में लेफ्ट लोअर weakness लिम्ब की है. वीकनेस That's है what सर. तो doctor. लोअर लिम्ब उसका जो होमोन्कुलस सेंसोट्रोपिक हाँ एग्जाम उस पे ठीक है. होता है उसके मुताबिक. जी सर. और हिप का वीकनेस है. तो कहाँ पर होगा? फ्रंटल लोब के किस पार्ट पे होगा? Sir, it would be like located medially over the frontal lobe, just near the sagittal sinuses.
It can be over there. I'm thinking in context of the homunculus somatotrophic organization. वो कहाँ पर होता है? Sir, the legs are basically located on the medial convexity side of the frontal lobe. So it might be something that is located near the side of the sagittal sinus and the midline or the medial convexity of the frontal lobe, causing pressure effect and leading to Think it is contralateral something left lower limb weakness. sagittal, Ji, sir, it can be. sagittal posterior frontal lobe near the motor strip. Yes or no? Sorry, sir, I couldn't hear the complete sentence. Near the motor strip. posterior frontal lobe में ही होगा ना बेटा, motor strip के पास जी ही। सर, जी सर, ठीक जी है। सर। तो that is good के it's a, it was a no brainer, left lower limb में weakness है, foot drop है, तो it has to be something वहाँ पे parasagittal भी। जी सर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। I wouldn't give you an extra mark for this. जी सर। This straight away उसमें है। So what do you think, what kind of a lesions can be there? Okay, sir. Considering all these findings and context of something in the parasagittal region of the frontal lobe, it can be a neoplastic etiology. Uh, Sir, I asked about fever. The fever history was not positive and TB contact was not positive. So I can keep, but not very likely infective etiology as well. And then apart from that, the headache, uh, although not supportive, it was not sudden, but I can also keep vascular. So neoplastic, infective, and vascular. Vascular में क्या चीजें इस जगह हो सकती है? Sir, the points are not very much in favor of vascular. That's why I've kept it third in my list of DDs. It has sudden headache. This patient does not have sudden headache. The only the intensity of the headache can be to some extent linked to my etiology of vascular. Since the intensity was severe, it was not sudden, and the age was also not very much supportive. But yes, the intensity goes in favor. ठीक है, चलें, मतलब जी, अच्छा third है। third in तो my list अगर of होगा DDs, भी तो not first in my AVM list of होगा DDs. कोई उसमें जी, सीधा, ठीक है। Unlikely to have an aneurysm or anything there. जी sir. That's why I've kept it third in my DDs, not on the So top. if anything, it has to be an AV malformation or something, which is very जी, unlikely जी sir. given the history. Now, you said neoplastic. तो किस किस्म के neoplastic में आपका differential क्या है? Okay, sir. Considering all these findings, I would like to keep some sort of an intraaxial pathology, like a glioma, first on the top of my DDs, based on certain points which goes in favor of it. Next, I would like to keep any extraaxial pathology, considering the gender of the patient, that I would like to keep it second on my list of DDs. And yes, so glioma, meningioma, and yes, these can be, sir. और कोई चीज हो सकती है? Sir, neoplasms में? जी, Sir, yes, it can be. Uh, it can be some sort of a lymphoma as well. And then, yes, the lymphoma, which is located, not near the ventricles, yes, but it can be glioma, meningioma, lymphoma. And then, yes, age is not supportive, but yes, can be METs as well, but very low down on the list. Not very much in favor of that. any cystic lesion भी हो सकती है? Yes, it can be atypical meninge. It can be any cystic type pathologies, cystic solid, mixed. Yes, it can be. So you are saying it has to be an intraaxial pathology on the top of your list. Uh, Why is that? Sir, first of all, the gender, it is not very much supportive. If it would have been the same case with a female, then I would have considered meningioma to be on the top of my DDs. But since it is Abdullah, 40 years old male,
So that's why I'm keeping it second. But yes, the location goes in favor of meningioma. The gender goes against in the favor of meningioma. So yes, glioma on top, but meningioma on second, just based on gender. Based on gender. Right? But That's if you would good. have allowed me, sir, general physical examination, I would have checked the head of the patient as well. If there was some bony swelling, then that would have also gone in favor of There was no meningioma. hyperostosis there. Ah, okay. Then I don't yes, know. I haven't seen the patient, so but generally speaking, I okay. don't think so. There is any hyperostosis. Okay, yes. Then second on the DDs, I think it's fine. So how would you investigate this patient? Okay, sir. I would first admit the patient in my ward. I would like to have all the baseline investigations, and then I would move on to have some specific investigations. Sir, baseline, I would like to send the blood work of the patient. I would like to have the CBC, ESR, CRP of the patient. And although history not supportive, but still I'd like to see if there's any infective pathology that might, because I've also kept it in the list of my DDs. I would like to see if the CRP, ESR are markedly raised or not. So apart from that, I would like to have some specific radiological investigations. And then I would like to, first of all, get the CT scan of the patient. And yes, in the blood work, I would also like to have a look at the RFTs, because I'm going to do the MRI T1 and T1 with contrast, and the contrasted images can have an effect on the RFTs. So yes, RFTs is very much in my line of management. Then the CT scan brain plane. And after that, I would like to have MRI images. Why would you like to do a CT scan brain? Why? Sir, again, if it's a meningioma, just in order to look for any sort of calcifications, to look for hyperostosis and those sort of thing. Uh, any sort of an What is the atypical lesion that might investigation have of calcification. choice for the brain tumors? Ji, sir? What is the investigation of choice for brain tumors? Yes, sir. The investigation of choice is MRI. MRI scan. MRI brain. Yes, sir. तो MRI में calcifications नजर आती हैं? जी, सर, आती हैं. किस उसमें आएंगी? सर, T1 दोनों में नजर आएंगे, दोनों पे में क्या हाइपोटेंस होंगे. होगा? ठीक है T1 पे कैसी नजर आएंगी, T2 पे कैसी नजर आएंगी? सर, दोनों पे नजर आएंगे, दोनों पे हाइपोटेंस होंगे. दोनों पे ठीक है. Very good. So Dr. Babar, can we show him the MRI scan? Can you explain this? Can you describe this? जी, sir. Okay, sir. This is the MRI scan of patient Abdullah, 40 years old, showing the MRI T1 and T2 weighted images. And sir, the first image shows hypointense lesion, which is located just near the which is located, looks to be on the parasagittal sinus, located near the vicinity of the parasagittal sinus, centered around the central sulcus in the area of the motor strip, and it is in the region of the right side of the brain. And on the second image, I can see the T2 weighted image of the patient, showing ISO2 hyperintense lesion, uh, causing causing pressure effect. And it seems to be, I can appreciate CSF cleft as well. Yes, this supports my diagnosis of an extraaxial pathology that I'm looking at, located on the left side in the vicinity of the parasagittal region, centered on the central sulcus in the area of the motor strip. Yes. Okay. Causing midline shift as well. Intensity on the back of, the posterior aspect of the tumor. I don't know. It can be this big calcification. Ji, sir, can be, I think. Okay. I would. Chale, so what else? You like to see more pictures or? Ji, sir, I would like to see the contrast
T1 with contrast, and I would also like to see other sequences fully differentiate. डॉक्टर बाबर और ठीक है जी दिस uh, इज द कॉन्ट्रास्ट स्कैन uh, yes, this is the contrast. Okay, I can on this contrast T1 scan, I can see that this lesion that I described earlier is it's not avidly enhancing, but it's homogeneously enhancing. Yes, the location is the same that I mentioned before, and it looks to be an extra-axial pathology. And in the coronal scan, can you show me that? Yes, I can see no cortical margins on the top of this etiology. So this fully reinforces my diagnosis that it's not a peripheral sign pathology. It's likely some sort of सैजिटल में parasagittal pathology. सैजिटल स्कैन में कुछ और भी नजर आ रहा है Ji, sir. I can appreciate the dural tail as well. So this supports my diagnosis of an extra-axial parasagittal right-sided meningioma, most likely. What are the options of treatment for this now? Uh, You tell this patient he's a 40-year-old guy. hmm. And what do you think the size of the tumor is? Sir, it's quite large. It is located on the just in the vicinity of the motor strip, and yes, it's quite large, sir. Okay. So what are the options of treatment हमारे पास अभी? पर इसके कोई पेरी लीशनल कोई इतना बड़ा एडीमा तो हमें नजर नहीं आ रहा. Sir, you asked about the investigations. I forgot to tell you one investigation very important in this case that I would also like to get. I would like to get the MRV of the patient in order to check the बिल्कुल patency of the sagittal sinus. surgical sinus. So that might have an ये impact on the बिल्कुल surgical approach that I am मिड लाइन using. में लगता है और सैजिटल में हाँ जी लाइन कट लग रहा है इसमें कोई साइनस लग रहा है जैसे ब्लॉक है. जी सर. Can't 100%, but we would like to do MRA, MRV to see the जी सर. excellent, जी very. सर. So what are the options of treatment हमारे पास? Okay, sir. The options and the treatment are the considering all these things. The primary option would be surgical. Uh, if it Yeah. was a dubious case or a doubtful case, I would have undergone biopsy first. But this, all these radiological findings and the other clinical examination, this supports my diagnosis of an extraaxial meningioma, and my primary operative primary operative excision would be my first management option. So, जी sir. आप पेशेंट को क्या बताएंगे? Sir, I would counsel the patient and his family that it is located in that What are the sensitive. risks Ji, involved ji, in this one ji, ji. surgery? I'm telling sir. I would counsel the patient and his family that it is located in very sensitive area of the brain, and operating in this sort of a area and can have drastic consequences on the lifestyle of the patient and the post-op period. As it is located on the motor strip, the weakness can prolong and it can exacerbate क्या apart from. weakness आएगी? बेटा, you are a scientist, you are a doctor now. हाँ जी. So we have only 5-10 minutes. तो tell me क्या क्या weakness आने का chance है, क्या क्या risk है, किस किस चीज के मुतालिक patient को family को explain करेंगे आप? Sir, yes, he can have a weakness of the. He's already having weakness of the left lower limb. He can develop weakness of the upper limb as well, So and he can. hemiparesis, hemiplegia. Yes, sir. Yes. He can develop dense hemiplegia, and although at the moment he's having only left leg, but after the surgery he can have dense hemiplegia, and yes, if a person is not careful, although not located in the left side, it is located in the right side, then the patient can have some momentary aphasias as well. But it's not located in the dominant, it is located in the right side. But momentary patient can have some dysphasias फोकस and. रहे, फोकस रहे. जो चीज मैं जी पूछ रहा सर. हूँ वही बताएं. Don't go
अच्छा, जी सर। हाँ, तो ये हो ओके गया। सॉरी। दूसरा क्या, you have to tell the coming, we have to start surgery. ओके सर। हाँ, हाँ, तो और पेशेंट क्या कैन बताएंगे, एक ये बताएंगे, what are the sir, जी, patient can have sir, should I tell the complications, the intro and the जी, जी, हाँ, हाँ कॉम्प्लिकेशन बताएं हाँ ताकि हम हाँ आगे हाँ। बताएं। Patient can have sir complication. He can have bleeding, and if the surgeon is not careful, he can damage the superior sagittal sinus. The patient can have a venous infarct, and then apart from that, he can damage the other adjacent parts of the brain as well. If the surgeon is not careful, then he cannot excise the tumor fully. Apart from that, there can be any post-op infections, and all these findings should be kept Because in it can be hand. involving the spirit sagittal sinus, we may not be able to take it out fully. जी The sir. is So involved. yes sir. We can rupture the superior sagittal sinus. जी In sir. fact, this meningioma is जी the sir. surgery of the veins. ठीक है? तो इसमें आपको वो बड़ा केयरफुल। Veins, yes sir. Okay, fine. You have to जी sir. the family agrees to it. तो आप इसकी सर्जरी करनी है आपने, how would you proceed? Okay sir, I would uh, first of all like to have after counseling of the patient I would it's a surgeon bloody for the scans again, and then I would counsel the patient again, and then after counseling I would bring him to the operation theater. I would take the anesthetist on board, and then I would sir ask if there is any option of embolization, if that might be under my consideration. If embolization is possible, and I can तो discuss with the angioembolization team if इसमें they can. ऐसा नजर तो नहीं आ रहा, तो ये ऐसा Okay. ठीक है। ठीक है sir, if embolization is not possible, then yes, I would proceed for my surgery. And Would you get the embolization for no, no, every sir, patient? just in obvious feeders that might be taken by the angioembolization team, just to reduce the vascularity and to reduce the drastic ठीक है, complications. चले, सही है, Mm. चले। और क्या Sir, then I would proceed with my surgical exposure. पोजीशन क्या होगी? Sir, position would be supine, and just a bit tilted towards the left side, so that uh, it is the right side is facing up. It is directly under my view. I would fix the head in a 3-point Mayfield head clamp, and then I would make a linear or a horseshoe shaped incision of the skin. And after anesthetizing the area of the skin, and after clamps and telling, I would sir make a 4 bar hole craniotomy. Sir, the 2 bar holes they would be centered on the sagittal sinus, and the 2 bar holes they would be centered away from the sagittal sinus in a form of quadrangular craniotomy. And sir, the 2 bar holes located on the sagittal sinus, I would make them last. I would not make them first. First, I would make the 2 bar holes on the sides, and then I would straddle. Then I would make the bar holes on the sagittal sinus. I would be very careful not to damage Okay, fine, you any have the draining veins. lifted the bone flap, आप क्या Yes. करेंगे? With the dura, I'll be very careful with opening of the dura, and I'll be careful to keep the pedicle at the superior sagittal sinus and be reflecting the dural sleeve onto the superior sagittal sinus.
Sir, तो दूरा इससे चिपका नहीं होगा? So would you open in the center of the tumor? Would you yes, sir. In most of open these cases, up the because of the tumor? long standing ongoing compression, dura also becomes paper thin and adherent. So yes, it can be. Yes, sir. Probably involved too, क्योंकि इसमें तो involved लग रहा है. जी सर, So would you बिल्कुल. keep that dura or would you इसको discard कर देंगे इस dura को जो tumor के ऊपर Yes, है? sir. If it's involved, and most likely it is involved, then yes, I would discard the dura, sir. Yes. So now how would you take the tumor out? कोई और आपको चीजों की जरूरत जी होगी सर, इसमें? now that I have You opened the open the dura, dura, जी सर. आपने साइड से खोला है, सेंटर से खोला है, कहाँ से खोला है? Sir, I would first of all bring my microscope into view. I would bring my CUSA, and then I would first of all start internal debulking of the patient, of the tumor, sir, so that it is decompressed internally. And then after decompressing it internally, then I would keep on making space. I would utilize CUSA, I would utilize my microscope and be very careful not to damage any draining veins and not to damage the parasagittal sinus. And then just carefully and meticulously I'd be taking the tumor out. And in the end, if I'm noticing that there is some portion of the tumor which is left on the superior sagittal sinus which I am not able to take out, then sir, I will be very careful of that portion of the tumor as well. तो क्या करेंगे आप उसको फिर? Sir, yes, if I am, if I have reached that stage in which the tumor is attached to space sagittal sinus and I can't get it out, then my best approach would be to leave the tumor as such. Small sliver of the tumor attached to the superior sagittal sinus so as to avoid the drastic complication of bleeding. Then in the post-op period, I can offer the patient radiotherapy. Sir, so that would be my approach. But yes, there are cases described in which we can take it out and we can do the repair and reconstruction of the sagittal sinus as well, but that is not very successful in the studies and the trials. Okay. So it comes out, you have taken it out, you have completely removed the tumor, आपने ड्यूरा को क्लोज कर दिया है. बायोप्सी में कितने परसेंट ट्यूमर जो मेनिंजियोमास होते हैं ग्रेड 1 होते हैं, कितने परसेंट ग्रेड 2 होते हैं, कितने परसेंट कैंसर होते हैं? Sir, mostly they are grade 1, sir. Meningothelial and the fibrous types, आइडियली they are the मैं तो most जस्ट common. रफली फिगर्स पूछ रहा हूँ बेटा. Yes, sir. Sir, 80%, I guess. I'm not very sure, sir. Sorry. I guess 80% ठीक है. are grade 1. 85%, 83, 85% is grade 1. जी सर. और जी सर. एटिपिकल कितने होते हैं, परसेंट होते हैं जनरली स्पीकिंग? Sir, atypical, I think it's 8 to 10%, sir. 8 to 10%, जी सर. 30% भी कुछ कहते जी हैं. सर. तो थोड़ा उसके Sorry, बाद sir. I'm not कार्सिनोमेट. extremely sure about these percentages, but yes. ठीक है, वही आप सही कह रहे हैं. 8 to 10%, कई 12% भी जी सर. कहते हैं. ठीक है. Now you have taken the tumor out. What are the chance of recurrence of after complete resection, and what are the chances of recurrence after incomplete resection Sir, of the that tumor? all depends on my Simpson's grading, sir. What grade of resection वो that तो I'm हमने कह achieving. दिया बेटा, incomplete resection and complete resection. complete resection होगी तो grade 1 सर आपके जी मतलब. सर, अगर कंप्लीट रिसेक्शन हो गई है और सब कुछ हो गया सर, देन 9%. ठीक है ना. Many people say you are right, 9 to 13%. ठीक है. और incomplete सर इनकम्प्लीट उसमें सर कौन से इनकम्प्लीट, ड्यूरा इनकम्प्लीट है या बोन इनकम्प्लीट है, कौन सा वाला? उसमें तो आपने ट्यूमर छोड़ दिया ना आपने, तो इसके हाँ साथ सर. यस, देन जस्ट नियर 44 to 50%, सर. चलेंगे. आप तुक्का मार रहे हैं लेकिन खैर है. ठीक है, इसको देख लेगा. नाउ वेरी गुड. तो अगर आपने थोड़ा छोड़ दिया है ट्यूमर, जी सर. आपका पूरा नहीं हुआ, यू हैव लेफ्ट द पोर्शन बिहाइंड, व्हाट वुड यू एडवाइज टू द पेशेंट? Sir, yes, I would advise the patient that we have removed a major chunk of the tumor, but we have not been able to remove it fully 100%. So we would offer the patient a chance of radiotherapy, involve the neuro-oncologist and the patient if he can
have the access to. तो रेडियोथेरेपी में क्या उसको एडवांटेज होगी? हाउ वुड रेडियोथेरेपी बी डिफरेंट? किस किस्म की रेडियोथेरेपी आप दे रहे हैं? आप साइबर नाइफ दे रहे हैं, गामा नाइफ दे रहे हैं, या होल ब्रेन दे रहे हैं? SRS रेडियोथेरेपी। ऐसा जी रेडियोथेरेपी, सर, शेयर्ड रेडियस। उसमें क्या फायदा होगा? उसका कंट्रोल रेट क्या होगा मेनिंजियोमास में? हैव यू डन एनी स्टडी फॉर दैट? Sir, exact control rate, I don't really recall, but yes, as compared to the conventional fractional radiation, the doses are markedly low, sir, like 55, 45 to 55, and 60 even we can give in conventional, but in the SRS, the doses are specific and centered onto a point where we want to give them, and the Tell doses are also me, markedly low. this is a very important question. Tell me, what is the difference between whole brain radiotherapy and gamma knife therapy? Sir, gamma knife. जी सर, gamma knife is centered and focused onto a point where we want to deliver it. And first advantage is this. And then sir, second, in that we have to give a lot higher, markedly higher dose as compared to the SRS and the gamma knife, where we can deliver small amounts to a focal point. So that is an advantage where we can avoid the side effects of radiation as well. वो आप शॉर्ट उसमें देते हैं, जी सर, ग्रे जी डे, सर, और उसमें आप एक ही जी वक्त सर। देते हैं. व्हाट इज द सोर्स ऑफ गामा नाइफ रेडियोथेरेपी? फोटॉन सर। कौन सा, क्या चीज, किस चीज से वो आते हैं? आप सोर्स क्या है उसका? सर एक्सरे एंड गैमा सर, एक्सरेज एंड गैमा रेज। गामा नाइफ में क्या, वो कौन सा उसमें आप एलिमेंट इस्तेमाल करते हो? उसका सोर्स क्या है वो रेस का? आई गिव यू एक्स्ट्रा मार्क फॉर दैट. टंगस्टन सर, आई गेस। नहीं, कोबाल्ट 60. ठीक है. अच्छा अच्छा, कोबाल्ट 60, ओके ओके। और गामा नाइफ और साइबर नाइफ में क्या फर्क है? सर गैमा नाइफ, सर आई हैड रेड अबाउट इट, सॉरी आई फॉरगॉट एट द मोमेंट। आप भेजते हो सुबह शाम जेपीएमसी में, उधर भेजते हो तो चलिए ठीक है. वो लीनियर एक्सेलरेटर से देते हैं, उसकी गैंट्री मूव करती है. इसमें को वो लेट मी आस्क यू, अगर ये पेशेंट कहता है मैंने रेडिएशन नहीं करनी, गिव मी सम मेडिकल ट्रीटमेंट. अब जो नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, कैन यू टेल मी एनी मेडिकेशन जो हम आप दे सकते हैं? जी सर, उसमें सर लेटेस्ट ट्रायल्स हैं, लाइक द ERP रिसेप्टर थेरेपी होती है, सर हार्मोनल थेरेपीज हैं. So the meningiomas, if they are positive for the hormones, then we can give the ERP receptor therapies as well. And then we have the interferon therapies as well. And इंटरफेरॉन तो नहीं है कोई? sorry, ERP therapy, sir, hormonal therapy, I guess. हार्मोनल थेरेपी आप कह सकते हैं. उस जी सर, सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स दे सकते हैं. जी सर, और जी सर। आजकल तो टारगेटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ रही हैं. डू यू थिंक वी कैन गिव इट दैट टू? यस सर, बिल्कुल, हाँ जी, दे सकते हैं। You give me a name, I will give you a star. चलें, खैर वो तो मैंने वैसे पूछा है. बेबस कैम होता है, नाम मुझसे भी नहीं आता है इन चीजों के. बेटा, यू हैव डन वेल. आपका, यू हैव द बेसिक इंफॉर्मेशन. लेकिन आपका जो था, इट वाज वेरी स्लो, क्योंकि आप अभी तो आप एक्चुअल एग्जाम नहीं कर रहे थे, तो पर योर एग्जाम वाज स्लो. जनरली आपको आइडिया है. देखिए, जब भी इस तरह का आसान आपके पास आ जाएगा ना, तो जी सर, आपका वाइवा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है सर। क्योंकि नेचुरली यस जब सर. एक गिफ्ट को मिल गया था, तो आपका सारा टोटल वाइवा पे चले जाएगा. तो उसमें फिर ये चीजें, मैंने देखा सर्टेन थिंग्स लाइक हाइड्रोकेफलस, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट हाइड्रोकेफलस. जी लाइक सर, meningioma, you should know everything about meningioma. एग्जामिनर्स का जो पास फेल का क्राइटेरिया, इसका बार थोड़ा ऊपर चले जाता है. ठीक है, क्योंकि दे नो इट, के भाई
it was a giveaway. The moment you have lower limb headaches हो रही हैं, फुट ड्रॉप है, लोअर लिम्ब वीकनेस है, हमने आपको सारा फुली उसी तरफ कह दिया कि भी प्लांटर भी अब गोइंग है, सब कुछ अब गोइंग है. You know it के भाई it was most likely a tumor, parasagittal region में ट्यूमर है, most likely CT MRI स्कैन पे it was going. तो आपका सारा जो वाइवा है वो चले जाएगा ऑपरेटिव के ऊपर. आपका वाइवा चले जाएगा कि मेनिंजियोमा में क्या है, ग्रेडिंग क्या है, सारी चीजें. तो these are the subject जिसपे you should get extra mark. Your knowledge is good, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है. You have to tune yourself कि क्योंकि जी सर. most of the people जो मैंने जब तक एग्जाम में देता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि वो they were not able to finish their exams in उस टाइम में, तो उसमें वो फिर फंस जाते हैं. तो उसको थोड़ा सा आपको ट्यून अप करना चाहिए. बाकी आपकी नॉलेज इज क्वाइट गुड. आई थिंक इसको थोड़ा जो कॉमन टॉपिक्स हैं लाइक पिट्यूटरी ट्यूमर, लाइक मेनिंजियोमा, इस पे थोड़ा सा आपका बार वो ऊपर चले जाता है एग्जामिनर का. जी तो सर. एवरीथिंग अबाउट इट आपको पता है. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम. इंशाल्लाह यू विल पास. ठीक है. थैंक यू And सर. कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? नहीं सर. थैंक यू. एक चैट में लिखा है, किसी ने बेवाजिकम हाइड्रोक्स आपको लिख के भेज दिया हुआ है. somebody is really good. चैट में उन्होंने लिख के भेजा है. मोहम्मद आमिर साहब ने पूछा है, either we should start examination such as from the lower limbs of the brain. I think you should start from the brain, but you know, जैसे ही आपने लोअर लिम्ब को एग्जामिन किया, अपर मोटर न्यूरॉन साइन है, तो समथिंग इज देयर इन द ब्रेन. तो आप फिर इसको जल्दी कंक्लूड. इट्स इस वाले में आपको ब्रेन का भी करना पड़ेगा, लोअर लिम्ब्स का भी थोड़ा अच्छी तरह करना पड़ेगा. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स स्लाइटली टफ कि यू हैव टू इलिसिट दो साइंस, क्योंकि एग्जामिनर वुड बी लुकिंग फॉर कि आपने इसका प्लांटर करके देखा है, सो दैट यू आर एबल टू डिसर्न कि ये ऊपर मोटर न्यूरॉन लीजन है कि नहीं है. तो दिस इज वन ऑफ द फ्यू केसेस जिसमें आपको दोनों का ही करना पड़ेगा. ठीक है आमिर साहब. Sir, I wanted to ask, is hydroxyurea used in any of the trials for the ट्रायल meningioma? बेसिस पे ही दिया है. मतलब इट्स नॉट अ recognized therapy, but people have Okay. given in trials. Bevacizumab जो है. No, sir, I'm asking about hydroxyurea. Hydroxyurea का I exactly don't know. I haven't Okay. seen it, but you can check it in the literature. Okay, ठीक. sir. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Thank you, Baba. sir. Thank you, Dr. Thank you so Mazlan. much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. चलो, okay. Sir. Thank you for Thank your you so time, much, sir. sir. Thank you, sir. Dr. Babar? जी जी. Ji, are you going to discuss the topic or should we take a break? I think we should hardly I'll take 10 minutes. चलो ठीक है. Pineal gland की थोड़ी सी explanation है. Then we can wind up the session. Okay, okay. Dr. Shahrukh, आप कहाँ से? Sir, I am from PINS, Lahore. पिंस लाहौर. असल में आपने नाम नहीं लगाया था पूरी सेशन में.
So it was a little difficult to find you. अच्छा अच्छा, मैं नेम चेंज हाँ ही जी, करना but भूल गया, हाँ, आईफोन ही कोई लिखा मसला है। नहीं, but you were overall very good. दोनों लॉन्ग केसेस थैंक यू। आप बहुत अच्छे किए हैं डॉक्टर मोहसिन और आपने। थैंक यू। थोड़े इजी केसेस नहीं, मतलब जो फाइनल था थोड़ा मुश्किल था। कंपैरेटिवली मैनेजोमा वाज एन इजियर केस, बट ये है कि पिक अच्छा किया आप दोनों ने। ओवरऑल जो ट्रैक आपने फॉलो किया दैट वाज वेरी गुड। कहीं कहीं पे थोड़ी सी जो इन्फॉर्म थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको थोड़ा सा ट्यून इन करने की नीड थी, अदरवाइज इट वाज रियली गुड। थैंक यू सर। सर वो एक्चुअली ये होता है ना कि ये मेरा अभी फर्स्ट टाइम था जूम पे ना इस तरह से, तो आई, लेकिन हम जो अपनी ड्रिल करते रहते हैं ना फिजिकल में, तो उसमें हमारा मतलब स्पीड अप हो जाता है। लेकिन इसमें अब हर एक चीज उस तरह से बतानी पड़ रही थी और पूछना पड़ रहा था ना, तो उस वजह से शायद वो टाइम लैकिंग हो गया। आई डोंट नो के। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। फिजिकली ये सारे केसेस करने में और ऐसे ऑनलाइन करने में देयर इज अ बिग डिफरेंस। बट इस पे ये है कि एटलीस्ट आपकी जो ड्रिल हो जाती है हाउ टू फेस जी द जी। एग्जामिनर। हाँ जी हाँ जी अच्छा, ऐसे। एक एक और चीज मैं कह रहा था, प्रीवियसली भी मैंने ये चीज हाईलाइट की थी, कि जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट करें, देन नैरो इट डाउन। अभी तो हम ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं तो मोस्टली देर आर लीडिंग क्वेश्चंस पे हमारी बात हो रही होती है, लेकिन जब ओरिजिनल पेशेंट होता है तो वो अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। एंड इट्स बेटर कि आप उसको ओपन एंड क्वेश्चन से स्टार्ट करें, देन नैरो इट डाउन। समटाइम्स टाइम की कमी की वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दें, लेकिन इट्स बेटर कि फर्स्ट पेशेंट को बात करने दें एंड देन आप उसको थोड़ा सा चैनलाइज करें हिस्ट्री को। जी ठीक है। जैसे डॉक्टर मोहसिन ने फर्स्ट केस में मुझे कहा कि मैं आपसे कुछ सवालों का जवाब पूछूंगा जिसका जवाब आपने हाँ या ना में देना है। इनिशियली आप पेशेंट को अपना सिम्टम डिफाइन करने दें कि इस हेडेक को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बयान करेंगे। आपको जो सर दर्द की वजह से आप यहाँ पे आए हैं तो आप उसको थोड़ा सा बताएं कि किस किस्म का दर्द है, तो पेशेंट स्टार्ट कर देगा अपनी चीजें बताना, देन लेटर ऑन यू कैन आस्क द लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक है। उसे मतलब एक अच्छा, से 1.5 मिनट दें अपना खुद बोलने के लिए, उसके बाद फिर जो है हम आ, अच्छा, इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग्स आप कुछ भी नहीं बता सकते हो। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल कोई चीज बताते नहीं हैं, आपको लीडिंग क्वेश्चंस की तरफ ही जाना पड़ता है। कुछ पेशेंट हम्म ऐसे होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं हिस्ट्री में, हम्म। मतलब 1.5 मिनट तो आप कम बता रहे हैं, बाज़ औक़ात दे टेक इवन मोर टाइम, जो बयान करते जाएंगे, देन यू नीड टू चैनलाइज इट। अगेन इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द केस। ठीक है सर। अच्छा, पाइनियल रीजन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे बहुत से ट्यूमर्स हो सकते हैं और इस पे काफी लंबी डिस्कशन चल सकती है इवन ऑन दी अप्रोचेस। तो नोइंग द एनाटमी, द पाइनियल ग्लैंड अगर हम इसकी बात करें तो सुपीरियरली इट हैज द स्प्लेनियम ऑफ ऑटोस्केलोजम, anterior it has the third ventricle, anteriorly it has the tectum of midbrain, जिसकी वजह से collicular superior colliculus की वजह से पेरिनोड सिंड्रोम होता है। Laterally it has the thalamus, posteriorly it has the cortigeminal cister, and caudally is the vermis of cerebellum. So this is the exact position of the pineal gland, and you can see in the roof is running the vein of Galen. इसके anterior superiorly is the third ventricle. Anteriorly, it has the midbrain, and inferiorly, it has the cerebellum. जो क्लिनिकल फीचर्स पाइनियल ग्लैंड के होते हैं, जिस तरह से ये केस था, दे कैन प्रेजेंट वेरी वेगली, कोई लेटरलाइजिंग साइंस नहीं मिलती। समटाइम दे कैन ओनली प्रेजेंट विद रेज्ड आईसीपी, या बाज़ औक़ात पेशेंट विल गिव यू द टिपिकल हिस्ट्री ऑफ पेरिनोड सिंड्रोम, दैट इज द अपवर्ड गेज palsy, double vision and nystagmus. These patients can also have the endocrine effects such as diabetes mellitus and pre-oxidous puberty. डिफरेंशियल्स की जैसे हम बात करेंगे तो पाइनियल रीजन के पाइनियल पेरेन्काइमल ट्यूमर्स यहाँ पे हो सकते हैं, पाइनोसाइटोमा, पाइनियल पेरेन्काइमल ट्यूमर विद इंटरमीडिएट ग्रेड, एंड पाइनियल ब्लास्टोमा grade 1, 2, 3 and 4. It can have the papillary tumor of the pineal region, germ cell tumors like germinoma being the most common
germ cell tumor, or young age group में again you will keep the germ cell tumor germinoma on the top differential. Then is the embryonal carcinoma, choriocarcinoma, Yorkshire tumor, and the teratoma. जब भी जर्म सेल ट्यूमर की बात आएगी तो मार्कर्स की भी बात होगी, एंड इस पे आप ब्लड में हम मार्कर्स करवा सकते हैं, बट आइडियली सीएसएफ पे हमें मार्कर्स करवाने होते हैं, एंड अगेन दे आर नॉट पॉजिटिव इन ऑल द केसेस. सिर्फ 40 to आई गेस I don't remember the exact figure, but 30 to 40% of the cases may they are positive, but still you cannot rule out on the basis of negative markers. ग्लायल ओरिजिन ट्यूमर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायमा, एपेंडाइमोमा. उसके बाद कुछ मिसलेनियस पैथोलॉजीज आ जाती है इन विच फाइनल सिस्ट के हवाले से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हेन डू यू ऑपरेट द केस, एंड उसको आप कब छोड़ सकते हैं. ओके. मेनिंजोमा, कैवर्नोमा, वेन ऑफ गैलन एन्यूरिज्म, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी ऑफ दिस रीजन. Okay, so I have taken this table from human. उसमें differentials के कुछ important points दिए गए हैं. So इसमें कुछ important चीजें ये हैं कि जैसे germinoma, Okay, it is Baba, going we to give you the cannot intense see uniform enhancement. your slides moving. अभी कौन सी slide पे है? अभी MRI की स्लाइड है. You are sharing, I think you are not sharing the slide show. हाँ, अब नजर अब सही है, अब सही. ओके, सॉरी, रियली सॉरी. सो जस्ट ये एक मैंने पिक्चर दिखाई थी फॉर द एनाटॉमी लोकेशन ऑफ द पाइनियल ग्लैंड. बाकी तो सारी थ्योरी है. वील शेयर दी स्लाइड्स. अच्छा, ये एक टेबल है फॉर द डिफरेंशियल्स जर्मिनोमा में, जहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स बनाए हैं. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और इसके अलावा मेनिंजोमा में पूछ सकते हैं कि अटैचमेंट टू द वेलम इंटरपोजिटम, यहाँ पे जो इसकी रूफ बनाती है थर्ड वेंट्रिकल की, वेलम इंटरपोजिटम, वहां से मेनिंजोमास अराइज होते हैं. Then coming to the pineal cyst peripheral enhancement देती है. There are no nodularities, and unless it becomes symptomatic or more than 2 centimeters of size, we do not treat it. ओके. देन यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होती है रिगार्डिंग द CSF डाइवर्जन, depending upon the symptoms, if those are dilated. Third ventriculostomy, उस पे we are doing two things. First of all, we are bypassing the channel for the CSF passage, and plus if we can take the biopsy, so it is a advantage to us. We avoid the VP shunt to reduce the chances of shunt dependency, infection, and most importantly, seedling of the tumor. So shunt's a better option आपके पास है. First of all, going for the ETV. Otherwise, we can just put a drain, and later on, if we need, उसको हम shunt में convert कर सकते हैं. If the patient is asymptomatic, go for the definitive procedure directly. अगर हमारा open surgery का ही plan है तो हम directly open surgery की तरफ जाएंगे. Another important option is stereotactic biopsy. Now, indications: patients who are not fit for surgical resection, metastasis, closely adherent to the brainstem. In situations where we have to go for a minimal invasive procedure, जिसमें हमारे पास options हैं of the stereotactic. Disadvantages: limited exposure, expertise for the surgery. If it bleeds, especially from the venous structure surrounding it, vein of Galen या कहीं से, so it can have the drastic effects. And small sample size आएगा जिसमें हम decompress पूरा नहीं कर पाएंगे tumor, just we'll get the biopsy. So these are the few indications जिसमें हम prefer करेंगे stereotactic, and इसके disadvantages क्या हो सकते हैं. तो ये एक algorithm दिया हुआ है. More or less ये हमने already discuss कर लिया है. If the patient has hydrocephalus, हम endoscopic third ventriculostomy की तरफ जाएंगे. अगर CSF markers हमें
पॉजिटिव मिलते हैं तो वी आर सस्पेक्टिंग देयर हाई चांसेस ऑफ जर्मिनोमा, सो उसमें हम रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि सिर्फ 30 to 40% ऑफ केसेस में ही हमें CSF मार्कर्स पॉजिटिव मिलते हैं। इफ दे आर नेगेटिव अगेन देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ सर्जिकल रिजेक्शन और वी कैन गो फॉर द स्टीरियोटैक्टिक नीडल बायोप्सी। जब हम सर्जिकल रिजेक्शन कर रहे हैं एज अ ट्यूमर इज बिनाइन, either we can go for the gross total resection and no further treatment is required, and in case if we do the subtotal resection depending upon the biopsy we can keep the patient on conservative management, या अगर radio sensitive tumor है तो then we'll go for the radio surgery. But if it is malignant and we have done the gross total or subtotal resection, still we need to give the adjuvant chemo radiation therapy. Similarly, अगर हमने stereotactic biopsy की है, it comes out to be a malignant tumor, we have to go for the adjuvant chemo radiation therapy, and if it is a benign one, then we can leave it, conservatively monitor it conservatively. ये stereotactic biopsy के कुछ channels हैं जिसमें usually we use the ACPC line, so we can directly go to the tumor. अच्छा, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, इस पे जो हम यूजुअली जिस पोजीशन में कर रहे होते हैं प्रॉन कॉनकॉर्ड पोजीशन में, बट स्टिल दे कैन आस्क अबाउट द सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन की आपको सारी पॉइंट्स पता होनी चाहिए, स्पेशली द डिसएडवांटेजेस एंड व्हाई वी डोंट गो फॉर द why we don't go for the sitting position, what are the side effects of it. Okay, so for the sitting position, this is usually preferred for the infratentorial supracerebellar approach because of the gravity effect. जो blood है वो settle down हो जाता है and the surgeon gets to the tumor easily. Gravity works in the surgeon's favor by reducing pooling of the blood in the operative field and by facilitating dissection of the tumor from the deep venous system. There is risk for air embolism, pneumosyphilis, and subdural hematoma. For air embolism, हमें जो है वेनस जो सुपीरियर वेना कैवा है उस पे कैथेटर रखना पड़ता है. We need the Doppler ultrasound intraoperatively to find it out. So we need the Doppler monitoring, helps detect small amounts of air entering the venous system during the operative procedure. And इस पे पूछते हैं कि once you are suspecting air embolism, saturation drop होना start हो जाती है patient की, cardiac जो arrhythmias होती हैं, then you halt or reduce आप procedure को stop down करेंगे, anesthetic को on board लेंगे, and then you deal with that. Okay. Now coming to the prone position, the prone position is simple and safe for supratentorial approaches. It is generally comfortable for the surgeon. The steep angle of tentorium, however, makes the prone position impractical for the infratentorial approach. जो टेंट का एंगल, if it would be too steep, तो कॉनकॉर्ड पोजीशन या प्रोन पोजीशन में it becomes very difficult अगर हम infratentorial approach की तरफ जा रहे हैं तो. This position is often useful for the pediatric population. To facilitate its use, the position of the head can be rotated 15 degrees away from the craniotomy side in variation known as the concord position, जिसमें हम usually case करते हैं prone position. Now, steps of the surgery. After exposure, बिल्कुल सही बताया था. We start from the anion to C1 या C2 तक. Apart from the the suboccipital craniotomy, we can also go for the C1 की जो arch है उसको भी break down कर सकते हैं if we want more exposure. अच्छा, इस टाइम पे हम ventriculostomy कर सकते हैं. Frazier में we can keep the drain in case post operatively हमें जरूरत पड़ती है to relieve the hydro, या हम ट्यूमर अगर पूरा नहीं निकाल पाए हैं तो. अच्छा, कोनी वर्क पे क्रेनिक्टमी क्रियोटमी करेंगे. स्टार्ट फ्रॉम द वेनस साइनसेस हमें एक्सपोज करने हैं एंड ड्रिल फाइंड द रोजर्स. ड्यूरल जो ओपनिंग होगी वो यहाँ पे बतानी थी कि वाई शेप हम इंसिशन देते हैं. वाई वी गिव दी वाई शेप इंसिशन to basically save the
साइनस, inferior sagittal sinus, occipital sinus को सेव करने के लिए भी मेक दी वाई शेप्ड इंसिशन, और उसको टेकअप सूचर्स हम ले लेंगे ऊपर की तरफ। These are a few pictures जिसपे एक्सपोजर दिखाया गया है। सब ऑक्सीपिटल की न्योटमी हमने की है, वाई शेप्ड इंसिशन देके we'll open the dura. Once we open the dura, we'll see the cerebral tonsils on either side. This is exactly our trajectory जहाँ पे हमें काम करना है। So we have the straight sinus in the roof, यहाँ से हमें चैनल बनाते हुए anteriorly जाना है। If we have the back picture, okay, so this is how you will see जब आप pineal region में पहुंचेंगे तो there is a bunch of veins here, the basal vein, intercerebral vein, together they are going to form the vein of Galen। ये पीछे vein of Galen दिखाई गई है। And again we have the this is the pineal gland just below it. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? हेमरेज, इनकम्प्लीट रिसेक्शन, हाइड्रोसेफलस पोस्ट ऑपरेटिवली हो सकता है, पेशेंट को हेमीपैरेसिस या हेमीपैरेसिस हो सकती है बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ ब्रिजिंग वेन, इम्पेयरमेंट ऑफ एक्स्ट्राओक्युलर मूवमेंट, अपर केस पैल्सी, सिटिंग पोजीशन में एयर एम्बोलिज्म, सबड्यूरल हाइग्रोमा, नीमोसिफिलिस हो सकता है पेशेंट को। इंटरहेमिस्फेरिक में सेंसरी और स्टीरियोग्नोस्टिक डेफिसिट हो सकते हैं पेशेंट को। ऑक्सीपिटल ट्रांसटेंटोरियल अप्रोच में विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो सकती है। And that's all from my side regarding the pineal region tumors. Okay, Dr. Mohammed Amir is asking कि in cases of acute hydrocephalus what do we do? ETB की तरफ जाएंगे या VP shunt की तरफ जाएंगे? अच्छा, अगर patient is stable, you can put the patient on next list, उसमें हम ETB करके procedure की तरफ proceed कर सकते हैं। But in setups जहाँ पे if the ETB is not available, patient को mobilize करने में आपको थोड़ा time लगेगा, then you have no other option than going for the VP shunt। अगर पेशेंट का जीसीएस acutely fall down किया है, below 8 चला गया है, it's an emergency केस, तो आप उसमें इवन ईवीडी भी कर सकते हैं। But ideally we should put the patient on next OP list, otherwise we can go for the VP shunt. Next question is, can we go for the test dose of radiation in cases of radiographically suspected germinoma, or we should first do biopsy? Okay, Dr. Amir, इस पे अब जो argument होती है कि in any case we have to go for the biopsy first unless the diagnosis is established। radiation therapy को फेवर नहीं करता। इस पे एक पैराग्राफ ग्रीनबर्ग में भी लिखा गया है कि the first going for the surgery is preferred। डॉक्टर बाबा, जी जी। ये जो सेमिनोमेटस वर्सेस नॉन सेमिनोमेटस है, सर से क्वेश्चन मैंने किया था तो वो कह रहे थे कि नॉन सेमिनोमेटस जो अगर आ जाता है उसका, तो उसमें आप टेस्टिकल्स को फिर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे या क्या करेंगे उसमें? ये पॉइंट मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, बट उस पे ये होता है कि नॉन सेमिनोमेटस जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें यॉर्क सैक ट्यूमर्स ऑन टॉप होते हैं, एंड यॉर्क सैक ट्यूमर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। ओके, तो उसमें फिर तो क्या सर पेशेंट को वो टेस्टिकुलर क्या वो करते हैं, उसमें थेरेपी क्या देते हैं? सर सरगालपन ये पूछना चाह रहे होंगे कि उसमें हम फर्दर वर्कअप करवाएंगे फॉर द टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, ओके ओके, पेशेंट को स्क्रीनिंग पे रखेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए, थैंक यू। Is there any other question? डॉक्टर sagittal meningioma craniotomy position, where would be the tumor site, above or below? मैं समझा नहीं ट्यूमर साइड। तो हम लेफ्ट साइड पे पेशेंट का हेड टिल्ट करेंगे सो वी कैन सी द ट्यूमर।
Or Dr. Mazamin, are you here? Yes, I'm here. Okay, so let's conclude the session. So this was the last session of our course, and सब अभी जो है शायद साथ बोर्ड में हैं तो इसी वजह से, बट विल बी अपलोडिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल टाइमली, तो एनीबडी कैन वॉच इट इन लेटर आवर्स। बाकी ये है कि इस दफ़ा एग्ज़ाम बहुत शॉर्ट नोटिस पे अनाउंस हुआ था, और हमारा भी इससे ज़्यादा एक्सटेंसिव कोर्स करवाने का इरादा था, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग इन मई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेट्स जो है वो इतनी प्रीपोन हो गई कि वी हैड टू अर्जेंट बेसिस पे हम ये क्रैश कोर्स करवा सके। बट नंदीलेस वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। जो जो टॉपिक्स जो हैं मोस्टली एग्जाम में आते हैं, जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, वो सारे हमने कोशिश की है कवर करें। बट ऑब्वियसली वर्चुअल एग्जाम और फिजिकल एग्जाम में देयर इज अ डिफरेंस, देयर आर लिमिटेशंस, but we have tried our best to convey whatever we could give, and however examiners we could arrange, because सर वालों का भी बहुत है कि वो उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें सब ने इतना कोऑपरेट किया और हमें टाइम दिया। सो दीज विल बी द एग्जामिनर्स, एंड आई एम श्योर जिन जिन ने वॉलंटियर किया है दे मस्ट हैव लर्न समथिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक। बस पैनिक नहीं होना, अभी जो है 2-3 दिन जितने आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और जो केसेस रखे हुए हैं और मतलब जो एडमिटेड हैं उन्हीं टॉपिक्स को आप स्टडी करें। और जब आप थक जाएं, जब कोई पढ़ने का मूड नहीं हो रहा हो, तो यू कैन वॉच दीज वीडियोस, तो टॉपिक्स इस तरह से भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। इफ इवन देयर इज एनीथिंग एल्स, you people can ask us, and we'll be really happy to help anytime. Best of luck, everyone. Thank you so much, everyone, and best of luck to all of you. Inshallah, you all will be doing really good. और अल्लाह रहम करेगा। वाकई टाइम बहुत कम था इस दफ़ा प्रिपरेशन का, और स्पेशली क्लिनिकल केसेस में देयर इज मोर नीड ऑफ प्रैक्टिसिंग इन द वार्ड, शॉर्ट केसेस, लॉन्ग केसेस, रिफ्लेक्सेस बनाने के लिए। बट आई थिंक एंड आई होप कि हमारे जो ये सेशंस थे, ये जो छोटी कोशिश थी हमारी तरफ से, it will prove to be fruitful, and you people will gain something out of it, inshallah. And again, best of luck to all of you. ठीक है, so that's all about it from our side. Wish you all the best. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो किसी भी टाइम आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, and we'll be there, inshallah. Inshallah. Okay, thank you. Okay, Allah Hafiz. Hafiz.